Voice not coming. Am I audible to everybody? Yeah, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. So welcome to Global Gurus Summit. And today we have taken a beautiful topic for especially for young entrepreneurs for their success. You know, this Global Gurus is a platform where it got originated in 2021 with this goal of aspiring, educating, transforming 1 million people struggling with their thought patterns, relationships, career, money. और उस चीज को ब्रेक थ्रू करने के लिए we created this platform. To start with it, I would like to share one story. You know, when a person comes from, जब यूनिवर्स एक ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, एनिमल्स बनाए, बर्ड्स बनाए, नेचर बनाया, एंड व्हेन दे क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. सो जब ह्यूमन बीइंग्स धरती पे आते हैं, आने से पहले there are 3 questions that were asked. They are asked over there whether you want to be a male or a female, or what, you know, how many years you would like to go ahead over there, and what you are going to contribute over there. तो जब ये allotment होती है, so at that moment of time, according to the number of years, the quota of food is being given to everybody. तो ये सबको पता है. तो एक बार एक इंसान बैठा हुआ था, बट वो बहुत ही परेशान था. रीजन बीइंग वो परेशान था, रीजन बीइंग उसको ये लगता था कि भाई मैं कभी एक टाइम में रोटी खाता हूँ, एक टाइम में रोटी नहीं खाता हूँ, और कभी मुझे 1 रोटी मिलती है, कभी मुझे 10 रोटी मिलती है, कभी मुझे 15 रोटी मिलती है. मुझे नहीं समझ आता मुझे एक ही बारी में रोटी क्यों नहीं मिल जाती. तो वहां से नारद मुनि जी जा रहे थे. तो नारद मुनि जी को कहता, नारद जी मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, ये मैंने ही माना कि मैं मेल हूँ और मुझे इतना रोटी मिले, मुझे इतना, बट मेरे लिए मैं परेशान हो गया हूँ कि कभी मुझे 1 रोटी मिलती है, कभी 2 मिलती है, कभी बहुत सारी. एक काम कीजिए प्लीज, आप जब विष्णु जी के पास जाएं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि मुझे मेरी रोटी सारी दे दीजिए, क्योंकि मैं ना फुलफिल होना चाहता, मैं ऐसे भूखा रह के नहीं रह सकता, तो प्लीज मेरा पूरा कोटा मुझे वापस कर दीजिए. तो नारद जी ने बोला अच्छा ठीक है. तो नारद जी जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट बताई कि वो कह रहे थे कि मुझे पूरी रोटी दे दी जाए. तो उन्होंने कहा ठीक है. उन्होंने भी अपने दूतों को बोला कि इनके हिस्से की जितनी रोटी है उनको भिजवा दी जाए. तो जब स्टॉक में देखा गया, उनका हिसाब देखा गया, तो कितनी रोटी निकली थी? 15 रोटी निकली उसमें से. अब 15 रोटी में से उसने बोला 15 की 15 रोटी उस इंसान को भेज दी गई. तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे को पूरी रोटी मेरी मिल गया. वाओ, आई एम सो हैप्पी. वो बड़ी खुशी खुशी उसने 5 रोटी खाई, सुबह 5 रोटी खाई, शाम को. अब इससे ज्यादा कितनी खा सकता था, बट 5 बच गई. अब वो कह रहे ये तो वेस्ट हो जाएगी. उसको थोड़ा सा बुरा लगा. उसके वेस्ट नहीं करता, मैं बांट देता हूँ. उसने बाकी लोगों में बांट दी. अब एक सृष्टि का नियम है, अगर आप सर्विस देते हो, जब किसी को दूसरे को देते हो, तो उनका एक नियम है कि अगर आपने 5 सर्विस दी है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके आपको वापस मिलता है. तो उसने जब 5 रोटी बांट दी, तो उसको 15 रोटी अगले दिन फिर उसके स्टॉक में आ गई. उसने फिर 5 खाई, बाकी 10 बांट दी. अगले दिन 30 रोटी आ गई. करते 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 मल्टीप्लाई होता चला गया. एंड जो 15 रोटी थी उसका उसने इतना बड़ा अपना एक ग्रैटिट्यूड का एक स्टॉक क्रिएट कर लिया. जब वो ग्रैटिट्यूड का स्टॉक क्रिएट कर लिया, तो उसने सोचा मैं क्यों ना एक ऐसा जगह बना दूं जहां लोग भरपूर खा सके. उसने अपना भंडारा शुरू कर दिया और उस भंडारे में भर पेट खाना लोगों को देना शुरू कर दिया. तो कुछ दिनों बाद जब नारद जी आए, उन्होंने कहा अरे इसके को तो 15 रोटी दी थी और इसने तो ये भंडारा शुरू कर दिया. माय गॉड, व्हाट इज इट. उसने कहा, उसके मन में ये आया कि ये तो ठीक है, भंडारा शुरू कर दिया, विष्णु जी ने मुझे झूठ क्यों बोला कि
उसके पास तो सिर्फ 15 रोटी का स्टॉक था और तो कुछ मिलेगा नहीं उसमें। वो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से पूछा कि ये क्या बात है कि ये जो स्टॉक उसका 15 था, आज तो इतना बड़ा भंडारा लेके बैठा है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, जब आप अपने आप, जब लोगों के साथ चीजें शेयर करते हो, लोगों के साथ आप उनको आगे बढ़ाते हो, तो यूनिवर्स भी मल्टीप्लाई करके आपको साथ देता है। तो लोगों, दोस्तों, आज हम ये जो 6 गुरुज बैठे हैं यहाँ पे, हमारे को अगर हम इंडिविजुअल इसको सबको मिला के अगर मैं बोला जाए तो 100 एंड अबव इयर्स का एक्सपीरियंस है हम सबको। एंड हम आज वो जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी मास्टरी है, जो हमने अपनी जो स्किल्स डेवलप की हैं, वो जो हमने अपने हैक्स क्रिएट किए हैं, सीक्रेट्स जो हैं, जो हमारे इतने सालों के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमका, वो आज आप लोगों से शेयर करने आए हैं। एंड बिलीव मी, इफ यू टेक दोज गोल्डन नगेट्स, you can also create that great empire for yourself and for others. So we are here to support you, we are here to give you those nuggets. So let me introduce myself. I am Magical Monica, and my main aim is to create magic in people's life. And I have got 30 years of experience in education, started my journey as a teacher, then evolved myself from TGT, PGT to the director. And अब उन 3 decades के experience के बाद, I started my spiritual journey as well, launched myself as a coach, and I have influenced more than 20,000 people. And with after evolving that, I have created, with my experience, I have created, magical, morning, ultimate success formula, which I'm going to tell you about it. What is it about and why I am here? That is what I really want to give. I really want to give the life you want. I can prove you that. कुछ experiments करेंगे, कुछ activities करेंगे, which will prove that you have the capability, you have the power to create anything on this earth. Are you ready? Can you put it on the chat box? Are you ready? Come on, let me see how many of you are ready. Yes. Thank you, Anu. Thank you, Shrikant. Wow. And I welcome everybody, whosoever is here. You have taken out time, your precious time, and you are here. I promise you, जो भी सोच के आप आए हो, जो भी लेने यहाँ पे आए हो, आई प्रॉमिस यू, हम 6 स्पीकर्स, 6 गुरुज मिलके आपको वो देंगे और प्रॉमिस आपको मिलेगा. एंड वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंस इन योर लाइव्स, because our main motto is your transformation, and that is our commitment, right? So let me thank you, Puneet. Thank you so much for responding. Thank you, thank you, thank you. And I hope everybody, please get a notebook and a pen and a water bottle with you, because this is going to give you so much of, good points, the secrets, the hacks, जो कि आपको note down करने पड़ेंगे. Right? So please take notepad and pen with you, and take water bottle with you. Then lots of interaction will happen on the chat box. Please utilize full interaction with it, because aap interaction karenge, aap hi ko milega. That is the power. You give power, you will get power. We give power, you will get power. That is the promise I really want from everybody, that commitment. Are you ready to go on? Come on, just put it into the chat box. How excited you are, let me see. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yes, Puneet, thank you so much. So let me start my presentation. I'm the first speaker over here. So let me share my great.
Okay, so this is what we all are. These are the different speakers that we have today, and we are here to give you that ideas, those strategies, those tools when you implement in your business. आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका बिजनेस है तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, right? So let us move ahead. So as I told you, I'm Magical Monika. My mission is to transform young entrepreneurs into commando. अब आप कहोगे कमांडो, आर्मी पीपल? नहीं, हमें नहीं बनना. But let me tell you, commando means taking charge of yourself. Taking charge means आपका, आपकी जिंदगी आपके हाथ में, आपका बिजनेस आपके हाथ में, आपका थॉट प्रोसेस आपके हाथ में, आपके आइडियाज आपके हाथ में. And I am author of this book, Unlock the Commando in You. And this is going to give you, those wonderful ideas जो कि आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे. You will become from ordinary to extraordinary. That is my promise. And I am a self-mastery commando coach. I'm author, NLP expert, law of attraction trainer, Reiki pranic healer, and super cool mentor. Now you say, what is super cool mentor? Because I have gotten teaching experience, so I create normal teacher to super cool mentor, So I do take trainings of teachers, students, principals, whatnot. So I'm associated with 19 Shri Ram Global Preschools, where I'm taking care of the curriculum, taking care of the trainings, of everything, So that is what. So I am known as Magical Morning Commando formula I've created, and I'm known as a Commando Guru. What I do, I educate young entrepreneurs, especially you people, those who are here. And what I'm going to do, you are just like my students. I'll be taking you from anxious to more motivated, from fearful to confident, and from distracted to focused like Arjuna, जिसको सिर्फ एक आंख नजर आती थी, आपको आपके बिजनेस में सिर्फ वही नजर आएगा. And unorganized to self-disciplined. This is what I have created. This is what you are going to get, right? So I'm Magical Monika, life coach, NLP, and known as a commando guru. I love making commandos. So I have devoted, I am devoting myself to help 10 lakh individuals to improve their lives by empowering them with wonderful techniques so that the best potential, the highest version of themselves, they come out so that they can live the desired and loving life they really want to live. Right? अच्छा, अब ये मुझे बताओ, ये फोटो देख के आपको क्या लगता है? What is it? जब आप पैदा हुए थे ना, you were like this. What do you feel? कैसे लग रहा है ये? Just put it in the chat box. Let me see. क्या लग रहा है ये? Pure water. When you are born, you are like this. Pure, completely pure. Right? Yes. Thank you, Sangeeta. Thank you so much. जब आप पैदा होते हो, there is no tag, nothing, कोई fear नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई डर नहीं. ये नहीं कहता डॉक्टर इस बच्चे को ये होगा, ये ऐसा है, ये कमी है. कोई कमी नहीं है. You are whole, perfect and complete. There is nothing wrong in this. So you are pure soul, right? Now, and what happens is जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो स्मेल करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, जो टच करते हैं, वो एक्सपीरियंसेस होता जाता है हमारे साथ, राइट? That is what we experience. And when we experience that becomes your memories, that becomes your mood, that becomes your form, that becomes your perception, that becomes your expression, that becomes your imprint, that becomes your trauma. पहला इवेंट क्या होता है? जब आप पैदा होते हो ना, जो पहली थपकी होती है ना डॉक्टर की, वो पहला इवेंट होता है जब बच्चा रोता है.
सो रोने वाली बात नहीं, रोने वाली ये है कि पहला इवेंट होता है, उसके बाद जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, सम लेबल नहीं तो बहुत जिद्दी है ये बच्चा, कौन बोल रहा है, ये सुनता नहीं है, कौन बोल रहा है, इस डरपोक है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये मेरे पीछे पीछे रहता है, कौन क्रिएट कर रहा है? When you are creating the environment for that child, he becomes fearful. When you are creating an environment where you are not allowing your children to be expressive, तो वो डर जाता है, वो नहीं बात करता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता. I've seen parents, जो कि अपने बच्चे को, they don't want their children to get down from their bed और नीचे क्रॉल भी करें, नहीं बहुत अनहाइजीनिक है, नहीं चल पाएगा ये बच्चा. तो क्या होता है, 1.5 साल के बाद बच्चा चल पाता है, फिर ये सोचते हैं मेरा बच्चा चल नहीं रहा, आप उसको फील ही नहीं दे रहे हो. वो ग्रेविटेशन पुल जो होता है ना, वही उसको सपोर्ट करता है. सो व्हाट वी क्रिएट फॉर आवर चिल्ड्रन, दे बिकम दैट. एक बच्चा गली से निकल जाता है, डॉगी काट लेता है, ट्रॉमा, गली के डॉगी काट लेते हैं, जब गली में कुत्ता देखा वो नहीं जाएगा, हर डॉग से डरेगा वो. दैट कम्स इन योर मेमोरी. नहीं नहीं, मम्मी ने खाना नहीं दिया, ये मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी, मूड क्या है, शक्ल बना लेनी, रोना बना देना. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड. व्हाटएवर यू सी, व्हाटएवर यू हियर, व्हाटएवर यू स्मेल, व्हाटएवर यू टेस्ट, व्हाटएवर यू टच, you create your memories, you create your mood. You आइसक्रीम अच्छी लगती है ना, मीठा झटक हो जाता है, मूड क्या था, वाओ आई एम सो हैप्पी. जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या पता हैप्पीनेस क्या होती है, उसको क्या पता सैड क्या होता है, उसको क्या पता रोना क्या होता है. We create it, we do all those things, and when these event 2 is created, this is nothing but state. And और ये सब करने वाले कौन है, हम. Now all of you look into your environment and look at how many red things are there around you. Just have a look. आसपास देखो जरा, कितने रेड चीजें हैं. मेरे रूम में तो 5-6 हैं. How many can just count and write it down? Come on, put it into the chat box. How many red things are there? Come on, come on, come on. 8. Okay. Come on, come on, come on. How many red items are there near you? 5. Okay. 6. 6. Okay. 6. Wonderful. Now, how many blue items are there? अरे मैम हमने तो वो देखी ही नहीं. That is what. जब हम एक चीज पे फोकस करते हैं ना, दूसरे को हम डिलीट कर देते हैं, दूसरे को हम देख ही नहीं पाते. आपने अगर एक कार पसंद की हो कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, क्या होता है, most of the time on the roads you see the same car because rest of the things get deleted, right? This is what it is. And distort हम क्यों करते हैं, जो चीज हम देखते हैं ना वो हम ही उसको कुछ डिलीट कर देते हैं, कुछ डिस्टॉर्ट कर देते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू दिस थिंग हैज हैपेंड, जब आपकी वाइफ ने आपके हस्बैंड ने एनिवर्सरी बोल दी हो. हाउ मेनी हस्बैंड्स जो बैठे हैं यहाँ पे, आपने कभी कोई डेट भूल गए हो, या फिर आपने अपनी आप अपने मदर को विश करना भूल गए हो, कुड बी एनीथिंग. कहते ना तुम मेरे से प्यार नहीं करते, सब ये बोलेंगे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम भूल जाते हो, तुम प्यार नहीं करते हो मुझसे, राइट? यहाँ प्यार करने की कहानी नहीं है, यहाँ बादाम खिलाने की कहानी है. क्योंकि आप बादाम खिलाओ तो मेमोरी तेज होगी. कुछ भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी वो प्यार करना बंद है. और इस चीज को हमने क्या कर दिया, ये हमने बनाया है. सो whatever that is our thought process, nobody has told us this, but we वो भूल गए हैं इसलिए मुझे प्यार नहीं करते. करवा चौथ पे टाइम पे घर पे नहीं, मुझे प्यार नहीं करते, मेरी प्रेफरेंस नहीं है, राइट?
most of the time it happens. So that is what we only create those thoughts. किसने बताया? अपने आप, मन से, क्योंकि हमने अपने आप मान लिया यार अमेरिकन यार अच्छे नहीं होते. कितने अमेरिकन को मिले हो आप? बट यू ओनली डिस्टॉर्ट द थिंग्स. जनरलाइजेशन. आप बिल्ली रास्ता काट, अरे बिल्ली रास्ता काट के अपनी जाते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा. नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं जाना, अभी नहीं जाना. सैटरडे को ब्लैक कलर तो बिल्कुल नहीं पहनना. सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना. So these are the generalization what is being created either by the society or by our own experiences. तो जो भी हम देखते हैं that is event. देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, टच करते हैं, right? तो जो भी वो इवेंट होता है उसको हम ही डिलीट कर देते हैं, हम ही डिस्टॉर्ट कर देते हैं अपने सोच से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी जनरलाइजेशन से. और वही हमारा मूड चेंज करता है, वही हमारा मेमोरी बनता है, वही हमारा ट्रॉमा. राइट? दिस इज हाउ वी लिव. और ये डिसीजन हमारा होता है. राइट? सो these are the types of states we become. Either we are happy, joy, confidence, clarity, good health, love. This is all created. या फिर ये होता है, या फिर we are stuck, unfinished, agenda, conflicts, bad memories, abuse. All these states are being created due to this. And this is who created it? We created. You know, when I was in grade 6, so I was so afraid of English. इतना हवा लगता था. And घर में पढ़ती थी, होमवर्क भी करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन स्कूल में जाके टीचर के सामने, she was so strict. So she used to say, Monika, you are a duffer student. तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है. The moment she said, I am a duffer student, that label was here. मैंने लेबल लगा लिया अपना. I am a duffer student. I am a duffer. I cannot get good marks. I am a duffer. I cannot present in the class. I am a duffer. I cannot write good in English. I am a duffer. I cannot speak in English. I am a duffer. I cannot be good student. और मैं उस डर से कितने साल डफर बन के बैठी रही. Just that word duffer impacted my whole personality. But did teacher meant that? It was created by me. मैं actual में डफर हूँ. That is why my teacher is saying this. उन्होंने एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट डफर बोला था और वो मैंने अपनी पर्सनालिटी बना दी. So this is what state I created for myself. How many of you can relate with this? किसी ने एक बात बोली, वो आपके माइंड में छप जाती है कि मैं ये हूं. Just put it into the chat box. How many of you can resonate this episode with yours? Come on, put it into the chat box. Yes, please. Yes. अरे तो कल उसने बात किया है. अब Put yourself into the chat. Mute. Okay. Yeah. Thank you. और यही रीजन है जब हमारे फादर कभी कहते हैं ना, तू नलायक है, एंड देन यू फील दैट आई एम नलायक. मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती. मम्मी से पिटाई भी होती है, डंडा भी पड़ता है, चप्पल भी पड़ती, बहुत कुछ होता है. आज नहीं होता, बट हमारे टाइम पे होता था. हम क्या एक सॉल्यूशन होता था, हमारे मम्मी पापा प्यार नहीं करते. मेरे घर में हम 4 भाई बहन थे. मैं सेकंड नंबर पे थी. बड़ा वाला ब्रदर थोड़ा सा एग्रेसिव था. मैं सेकंड नंबर पे थी. थर्ड नंबर वाला मम्मी की गोदी में रहता था, छोटे पापा की गोदी में रहती थी. मेरे पास एजम्पशन, बहुत अच्छी एजम्पशन थी कि मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे प्यार नहीं करते. दिस इज माय स्टेटमेंट. बट पेरेंट्स के लिए 5 उंगलियां बराबर होती है. राइट? So this is what, who is responsible? We are responsible. Who has created it? I have created it.
So when I came to know this is my creation, immediately I changed my state. So you can also change your state. It is just 4-letter, 5-letter word, dafar, नलायक, ये नॉर्मल बात है, बट हम उसको अगर मान लेते हैं वो हमारी गलती है. Now the harsh reality of today's world is only 1% of the people are happy. 99 people are struggling with their life. They are not happy. या कोई ये रीजन है, वो रीजन है, एंजाइटी है, एंगर है, फियर है, एग्जाम है, परफेक्शन नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, सुसाइडल है, पेरेंटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर, ओवर थिंकिंग, बिजनेस ऐसे चल रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं चल पा रहा है. यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम माय फ्रेंड दे टोल्ड मी 4-5 साल के बाद बिजनेसेस बंद हो जाते हैं जो नया स्टार्टअप होता है. Very soon you are going to know what is the reason, because over here we have got those dignitaries, they have established so many businesses. और मैं आज किसकी बात करने आई हूं? मैं आज इसकी बात करने आई हूं कि आप अपने स्टेट को हाईएस्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हो. जब अपने स्टेट को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाओगे तो आप कुछ भी कर पाओगे. You are able to implement those strategies. This is which will be given by my friends over here today, right? So please take charge of your state. आप एक छोटे सा हम एक exercise करते हैं. I really want everybody to do with this exercise with me. Come on, all of you. Put 2 hands like this and close your eyes. Come on, it is a wonderful exercise. You will love this exercise. Put 2 hands like this. Yes, come on. Right. Thank you. Now close your eyes. You can switch on your camera as well. Let me see how beautiful you are, how smart you are, how handsome you are. कोई बात नहीं, कैसे भी तैयार नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता. Open your cameras. Come on. Yes. And put both the hands like this. Right. Thank you so much. Thank you. Now close your eyes and imagine मैंने आपके राइट हैंड में 2 एनसाइक्लोपीडिया आके रख दी हैं, 5-5 किलो की, यानी कि 10 किलो की एनसाइक्लोपीडिया मैंने आपके राइट हैंड में रख दी है. यस, राइट हैंड में. वाओ, कितना हैवी हो गया है. माय गॉड, वेरी हैवी. कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेयर कर लो. और अब मैंने 2 एनसाइक्लोपीडिया और मिल गई है मेरे को. आई हैव पुट इट इनटू योर राइट हैंड. 2 और रख दी हैं, 4 हो गई हैं. माय गॉड, 40 किलो आपके हाथ में है. इट इज सो हैवी. ओ माय गॉड, राइट हैंड इज सो हैवी. एक और आ गई है 5 किलो की. माय गॉड, इट इज सो हैवी. ओ गॉड, बहुत भारी हो गया. अब मैंने 100 बैलून्स आपके लेफ्ट हैंड में भी पकड़ा दिए. ओ माय गॉड, लेफ्ट वाला ऊपर जाता जा रहा है. 100 बैलून्स गैस के. ओ गॉड, ऊपर जा रहा है. ओ राइट हैंड नीचे जा रहा है. माय गॉड. यस, लुक एट योर हैंड्स. वेयर आर दे? राइट हैंड नीचे चला गया और लेफ्ट हैंड ऊपर. Why so? There was no weight, there was no encyclopedia, there was nothing but a thought. वो मैंने आपको एक थॉट दी कि मैंने आपको एनसाइक्लोपीडिया दिया है. आपको वो हैवी लगना शुरू हो गया और आपकी बॉडी अपने आप नीचे चलती चली गई. See? So you have the power. If you create your thought so strong, you can do anything. तो आपकी बॉडी वही करेगी जो आप करना चाहते हो. कितने लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं? Just put it into the chat box. कितने लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं? I am sure everybody wants to do that. You know, ये देखा गया है,
जब नया साल आता है, नए साल में माय हस्बैंड गोज टू जिम एवरी डे। तो नए साल में जब वो जिम गए तो पहले दिन मी सी सो मेनी मीन्स, जिम गए, देयर वाज नो स्पेस ऑफ पार्किंग। दे सेड ये क्या है, आज क्या तमाशा है? तो जो मालिक था ना वो कहता है, सर जी टेंशन मत लो, 10 दिन के बाद आधी गाड़ियां नजर नहीं आएंगी, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन था वेट रिड्यूस करना है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद शू। वो कुछ टाइम तक इंटेंशन रहती है, उसके बाद चली जाती है। सो दिस इज व्हाट वी, who is responsible? We, right? So you are responsible for your state. आपके माइंड में मैंने बोला कि एनसाइक्लोपीडिया है, 10 आगे, 10 और आगे, 10 और आगे, कितना बड़ा वेट दे दिया, आपकी बॉडी ने उसके हिसाब से चेंज होना शुरू कर दिया। और आपका स्टेट क्या बन गया? आपका स्टेट बन गया ये, आपका हाथ नीचे चला गया। सो now tell me, if you create that thought of winning your game of business, तो कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता। When you create that thought process, nobody can stop you, right? That is what, ये स्टेट भी आप क्रिएट कर सकते हो, ये स्टेट भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप अगर सोचोगे मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। भगवान कहता है तथास्तु, मेरा बिजनेस चलेगा, I will follow what my gurus are saying and see the difference in 3 to 6 months. You will be, winning that state, right? Yes. And this is the main game of this कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारी माइंड 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस माइंड होता है जो आप मुझे सुन रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ, आप देख रहे हो, ये कॉन्शियस है। आप सेंसेस में। मेटा कॉन्शियस माइंड होता है, जब सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब आधी नींद में होते हो आप, राइट? तो उस टाइम पे 95% आपका ब्रेन इस पे चलता है, और जब आपके इस 95% पे काम किया जाए तो आप हर चीज गेम जीत सकते हो। तो मैं इस पे काम करती हूँ, मैं ये आपका क्रिएट करती हूँ। जब 95% वाला मेरे पास होगा ना, आपकी ऑडियो, आपकी फीलिंग्स, आपका वीडियो, जैसे एक घर बनता है ना, सीमेंट, पत्थर, बदरी, उसको मिला के बनता है, ऐसे आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ऑडियो, आपका वीडियो, आपकी फीलिंग्स के साथ बनता है। मैं ये बनाती हूँ। When I create this, और जब आप इस स्टेट में आओगे तो आपको कोई भी काम, सब कुछ कर सकते हो। और स्टेट क्रिएट होता है, स्टेट, कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ स्टेट। मैं कितने पेरेंट्स से मिली, कितने लोगों से मिली, इवन एंटरप्रेन्योर्स से भी मिली, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है। कितने सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं, आज आपको सुनने को भी मिलेंगे, देखने को भी मिलेंगे, एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था स्टार्टिंग में, but slowly and steadily they gain that confidence. Confidence किसी मार्केट में नहीं मिलता, किसी मॉल में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। पेरेंट्स कहते हैं मैम मेरा बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं। 2 साल के बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, कमाल है। बट मैं ये कहती हूँ हर इंसान में कॉन्फिडेंस है, हर बच्चे में कॉन्फिडेंस है। तो ओनली थिंग इज दे डोंट नो व्हाट इट इज, दे डोंट हैव दैट क्लैरिटी। कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी बॉडी पोस्चर में स्पाइन सीधा करके खड़े जाओगे ना, वो कॉन्फिडेंस स्टेट है, राइट? एंड व्हेन यू टेक दैट चार्ज यू बिकम कॉन्फिडेंट। चार्ज लो, और जब आपको आपकी चीजों की क्लैरिटी होगी ना, दैट इज द कॉन्फिडेंस यू गेट। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा ना कि आपको यहां से वहां तक जाना है, जब आपको पता ही नहीं कहां से कहां जाना है, तो आपको कंफ्यूज रहोगे। आप कहते हो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। आप में कॉन्फिडेंस बचपन से रहे, जब से पैदा हुए आप में कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस देखो, जब आपने चलना सीखा था, कहां से आया था कॉन्फिडेंस? जब आपने पहली बार खाना खाया था, कहां से आया वो था कॉन्फिडेंस? So you have the confidence. The only thing is that clarity is not there. I promise you today, when you listen to today's gurus, you will get that clarity कि मेरे को कैसे बढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कि कौन से स्टेप पे मैं हूं आज और मुझे कहाँ जाना है।
that is the clarity you get, and that is what we are here for, right? And आपकी जिंदगी 3 चीजों से चलती है, इधर या पास्ट, या तो आप पास्ट में बैठे होते हो जब आप सफर कर रहे हो, टेंशन में हो, फियर हो, तो आप टेंशन में रहते हो, सफरिंग होती है, तो आप कहाँ बैठे हो? पास्ट में बैठे हो। और जब आपको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, आप कहाँ बैठे हो? फ्यूचर में। जो आप फ्यूचर में भी अगर फ्यूचर में बैठे हो, कहाँ है फ्यूचर? कहीं नहीं है फ्यूचर। कहाँ है पास्ट? कहीं नहीं है पास्ट। तो रहो ना प्रेजेंट में। आई विल टीच यू not to be in the past, not to be in the future, but be in the present. When you be in the present, invest your time, invest your brain, take charge, देखो कहां से कहां पहुंचते हो आप। That is what I'm here for, right? So this is a transformational journey where you will be having with me. You will be having a self mastery on yourself. You will become ordinary to extraordinary. You're already extraordinary. I just need to tell you, this is just, इसको हटा दो और देखो, you are such a beautiful human being, extraordinary human being, outstanding human being. ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी मेरे साथ आप कर सकते हो, और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चॉइस है, किसी और की चॉइस नहीं है, राइट? और मैं आपके साथ क्या करूंगी? आई विल हील योर पास्ट। आप कहोगे मैम हील पास्ट का मतलब क्या होता है? यू नो, इन योर रिलेशनशिप, इन योर बिजनेस, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे पैसे मार लिए, उसने मेरा ये कर लिया। आप जब उस ग्रज में रहोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो जो ग्रज है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। वो एक तरह का आपकी जिंदगी में मरा हुआ चूहा है, जो वो आपकी जिंदगी में पड़ा हुआ है। जिस दिन आपने वो मरा हुआ चूहा उठा के बाहर फेंक दिया ना, उस दिन आपका कमरा महक उठेगा, न्यू पॉसिबिलिटीज के साथ, न्यू आइडियाज के साथ, नए टूल्स के साथ। तो मैं इस मामले में आपकी हेल्प करूंगी। जो भी पुराना पास्ट है, जो आपको बार बार रोक देता है, जो कि आपको ब्लॉक कर देता है आगे बढ़ने से, वो नहीं आएगा। You will be free from that hurt. You will be free from the trauma. You will feel free from the old bad memories. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपका पास्ट मैंने ले लिया, ठीक है? प्रेजेंट में कैसे आगे बढ़ना है वो सिखाऊंगी। रोज कैसे प्रैक्टिस करनी है, रोज क्या ग्रैटिट्यूड करना है, रोज किस तरह से आप अपने प्रेयर्स लिखोगे, रोज कैसे चैंट करोगे, रोज सब कुछ आई विल गिव यू 1-to-1 प्लान। अपनी अंदर की आवाज, नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मुझे, दबा दूंगी मैं। यस आई एम केपेबल, आई कैन डू एनीथिंग। वो क्रिएशन आई विल गिव यू। एंड आपका टाइमलाइन, आपकी जिंदगी का रास्ता, आपके गोल्स, जो 9 स्टेप्स हैं, जो प्रूवन मेथड्स है 9 स्टेप्स गोल सेटिंग के, कि आपका गोल जो आपने लिखा वो अचीव करोगे ही करोगे। किस तरह से करोगे? उसके अंदर आपकी मिरर एक्सरसाइज भी आएगी, उसके अंदर आपका चैंटिंग भी आएगा, उसके अंदर आपके मंत्र भी आएंगे, उसके अंदर आपकी NLP टेक्निक्स भी आएंगी, सब कुछ है। और ये मेरे 31 इयर्स का एक्सपीरियंस को निचोड़ के मैंने ये बनाया है। ये मेरा आपसे वादा है, यू विल बी अ न्यू पर्सनालिटी ऑल टुगेदर एंड यू विल अनलॉक द जीनियस इन यू। यू आर अ जीनियस। आप नहीं मानते, मैं कहती हूँ आप जीनियस हो। मेरे साथ आओ, आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे जीनियस हो। You will be higher version of yourself. You know, Sachin, why Sachin Tendulkar is on the top? Why Sachin Tendulkar को क्यों example देते हैं? Because he plays at his higher version of himself. He has created his rich image. बिल्ली बन के आओगे, शेर बन के जाओगे. That is the promise. So be a Sachin Tendulkar. Be a Ranveer Kapoor. Be that personality who is really on the top. मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन सकते आप? सब कर सकते। तो ओनली थिंग इज, ये जो चीजें आपको रोकती है, आपका पास्ट आपको रोकता है, आपका फ्यूचर का ट्रॉमा आपको रोकता है, आपके अंदर की जो हायर वर्जन है वो आपको रोक देता है, बिकॉज आप उस फॉर्म में ही नहीं है।
So there is a gift for you. How many of you really want gifts? किसको गिफ्ट्स पसंद है? जरा देखूं कितने लोगों को गिफ्ट्स पसंद है. Put it on the chat box. Come on, my wonderful audience. Come on, put it in the chat box. How many of you love gifts? सबको पसंद है गिफ्ट. Yes, 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 yes. I thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है. क्या गिफ्ट है कि मेरी मॉर्निंग की कमांडो क्लासेस चलती है. सो 1 वीक की कमांडो क्लास आके देखो. आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मेरे नाम बदल जाए. You know, when somebody says कि आप कैसी पर्सनैलिटी हो, आप क्या हो, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, उड़ते परिंदे को बाज बनाती हूँ. समंदर परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्ती से जहाज बनाती हूँ. बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं कच्ची मिट्टी से ताज बनाती हूँ. This is who I am. And this is what I create in my commando training. It is a training where you will find your own self, where you can actually create your higher self. और कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जस्ट कुछ टाइम, एक थोड़ा सा टाइम आपने वो दे दिया, जिसको मैं पावर टाइम कहती हूँ, पावर आवर कहती हूँ, मी टाइम कहती हूँ, तो आप देखोगे कि आपकी जो सफलता है ना, मिनटों में होगी, कुछ टाइम में होगी. So let me invite you on my webinar where I am going to heal your past, I am going to empower your present, and आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करूंगी, और आपको आपके अंदर जो फोकस वाला अर्जुना है ना, उसको एक्टिवेट कर दूंगी. And my webinar is happening on 29th of May, that is tomorrow. Sunday है, लेकिन I promise you, आओगे तो जो मिलेगा ना, याद रखोगे आप. ठीक है, 60 मिनट्स का है, 5:30 to 6:30 tomorrow. और इसके साथ साथ 1 वीक की वर्चुअल लाइव ट्रेनिंग सेशंस आपको मैं फ्री दे रही हूँ. दिस इज व्हाट, एंड बिलीव मी, यू can become the commando of your life. Once you become the commando of your life, you can become Mukesh Ambani, you can become the other Elon Musk. जो मुझे नहीं मालूम, आपको ज्यादा मालूम होंगे कि आपके एंटरप्रेन्योर्स की जिनको आप फॉलो करते हो, आप वो बन सकते हो. There is no looking back. So let me see how many of you are getting registered into my session. Can I request my team to please put the things onto the chat box, my registration form. Then please follow me on Instagram, please follow me on the Facebook, the links are given below. So kindly register. I promise you, there is no looking back, and you become the commando of your life. Great. Anybody would like to ask anything, you're most welcome. Thank you so much, Varun, for supporting me, for helping me, for taking care of us. Thank you, thank you, thank you. And everybody just register yourself. Okay, so in any case, I am the anchor of today's session. So this is my session is over. Tanmay, this is on Young Entrepreneur Success Summit. So अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप स्टार्टअप में हो या कुछ है, तो आपको ये बहुत कुछ मिलने वाला है. Right? So let me introduce, you know, हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, यहाँ हमारा क्या काम है. What you're going to get into this seminar, you're going to get out of mental rut, you're going to think new thoughts, you are going to acquire new visions,
You're going to discover new ambitions. So that is why now I'm going to introduce a wonderful speaker, जिनकी मैं कायल हूं, because the strategies that he has, it's amazing. And he is a transformational coach, right? And with 3 decades of experience in training and development, and he has a profound impact on so many people. जिन को भी इन्होंने हाथ लगाया है वो गोल्ड हो गए हैं, and they are running their businesses so successfully. And he has assisted, you know, so many people जिनकी stress क्या, anxiety क्या, मतलब रामबाण आपको दे देंगे. अगर आपने रामबाण ले लिया तो आपका तो जो सक्सेस लेडर निश्चित है, right? And he is going to give you that confidence. He's going to give you that productivity. He's going to give you that those secrets that can take you to the success. So here comes Mr. Vinay Dave. Thank you so much, sir. Such a wonderful personality. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Monika ji, for such a wonderful introduction. ग्लोबल गुरुज में आपका स्वागत है, और आई एम आल्सो थैंकफुल यू कि आप लोगों ने अपना टाइम सैटरडे को निकाल के यू हैव जस्ट ट्राइड टू लर्न समथिंग इन योर लाइफ. सो ग्लोबल गुरुज की तरफ से मैं आपको इतना कि आपका दिन जो है, आपका टाइम जो है जी, यू कैन मेक मी होस्ट. Are you able to see my screen? Yes. Your voice is cracking, sir. Just have Come once again to Young Entrepreneurs Summit once again. Sir, आपकी आवाज क्रैक हो रही है. Just check your net, please. I think so. He got disconnected. Just bear with us. The screen visible है?
Vinay sir, you're not audible. I'm going mute. Is it all right now? Yeah, okay. Thank you for information. So 1935 में जब टाटा ने अपनी एयरलाइन चालू करी थी by the name of टाटा एयरलाइंस, बाद में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया एंड दे मेड इट एयर इंडिया। कुछ ऐसी गलतियां की उन लोगों ने इन द मीनवाइल की एयर इंडिया का लॉसेस कभी रिकवरी नहीं कर पाए। सबसे बड़ी गलती उन लोगों ने ये की कि 111 एयरक्राफ्ट का उन लोगों ने 2001 में 111 का एयर फ्लीट खरीदा, जिसकी वजह से उनके जो लॉसेस हुए वो कभी रिकवर नहीं हो पाए। लॉसेस की एक और वजह है कि दे कुड नॉट केयर अबाउट द कस्टमर्स, they were not maintaining the timings, and they were always often on strikes of the pilots or air hostess. So why I am telling you this story? It is very important for any businessman whosoever is here to see that दूसरे बिजनेस का सक्सेस का सीक्रेट क्या है, या दूसरे बिजनेस यदि फेल हो रहे तो उसकी वजह क्या है, so that they can learn from their failures and success and can adopt in their own business. So friends, let us proceed further. The name of the session is Enjoy Life with Success and Peace. However, when in business the success is essential, how many of you will agree that peace is also at the same time very much required? Because when mental peace is not there, you are ought to take certain wrong decisions which is going to affect your business. When the peace is not there, you are not in a mental state, and ultimately what will happen? Your business, you are unable to attract success. So when you are striving for success, your mental peace is also required. So we are going to discuss about the mental peace and the success both together, how you can obtain your business. Yes, Varun. Yes, Sonal. Yes, Jaypal. We are going to talk about the two states today. We are not only going to talk about the success, how we are going to get, but we are also going to talk how to attract success more faster with the peace of mind intact in there. So let me highlight one very interesting figure. It was published into Business Standard. The number of recognized startups in India in 2021 and 22 were 65,861. These figures were conducted in the Rajya Sabha by our Commerce and Industry Minister, Mr. Piyush Goyal. The number is quite impressive, 65,000 startup in 21 and 22. Now, these are the numbers for those who have registered themselves into portal. I believe that there may be 4 to 5 times the number which are not registered into the portal, but they have already started. So every year we can say that the new startups or new business are entering, the people entering into the business are more than 3 lakh. Unfortunately, another report which is published into another business magazine has confirmed that 90% of the Indian startups fail within 5 years of inception. It's a very shocking news. So that means if you are calculating that number of startups in India every year are more than 3 lakh, that means 90% are failure. So we can say that 2,70,000 people are failing within just 5 years of inception. A very, very shocking study we can see here. Surprising, isn't it? Yeah, it is not only surprising, but shocking also. That most of them, how many of you have experienced or observed somebody in your family or your friend circle, those who have failed within just 5 years of startup? With very good enthusiasm, but ultimately what happened? They could not succeed. They could not continue with their business any longer. So ultimately they failed. Before going further, before knowing the reason why they failed, let me introduce myself. I am Vinay Dave, a transformational life coach and mentor.
I've been associated with corporate sector for more than 20 years in the field of sales and coaching. I've been involved into skill development, one-to-one mentoring, and influencing human behavior. I'm on a mission to help and inspire 1 million people by 2025 by spreading inner peace and harmony in their life. Currently, also, I am associated with 2-3 pharmaceutical startups. My role is to advise them, to guide them how to progress. Interestingly, you know what I'm mostly doing there? I'm mostly saying them what not to do rather than what to do. Because there are so many shortcuts these startups adopt. And when they adopt the shortcuts, what happens at the end? They ultimately incur great losses. So it is very natural for a businessman or entrepreneur to go for such shortcuts, which is going to give them the shortcut profits. But ultimately, most of the cases, it does not happen so. Ultimately, it leads into the losses in the business and loss of the reputation for the long run. So we will see what happens when a startup, as we have seen that 90% of the startup fail. We will see one example of my friend whose name is Gautam. Now, Gautam is a MBA graduate from a reputed institution in India. He is inspired from the lot of startups in India, particularly PhonePe, Byju's, Ixigo, Oyo Rooms, Zomato, Paytm, and Ola Cabs. He feels that startups gives a good freedom for them to, show their ability, work without the boss. There is no 9-to-5 binding. At the same time, they can live the life with more comfort and live the life more freely without any supervision of any boss. They also feel that they can utilize their potential very well in the business rather than going into the job. So Gautam is inspired from all this startup, and he thinks that it will be better that if he enters into a startup, would be much more better. So let us study what are the plus points with the Gautam-like people, those who enter into startup, and what are the things which he does not know, which he requires to improve. I would request some of the people, if they want to note it down, they are most welcome. They can note down certain points if they wish to. So see, the plus point with the Gautam-like people have their full enthusiasm. They have got a very good passion. They are working with finance because initial finance maybe they don't have any liability of the family, since they are most of them are not married. They don't have any liability of their family. What are the negative points? Let us have a look at it, because these are the points which they are going to miss when they start their entrepreneurship. They lack novel idea. Now, what happens when they are seeing the success of so many new startups? What they try to do is they try to copy and paste that idea. They lack effective planning, because the planning is not made because there is no experience. They do not plan for the adverse events. It is very natural that in the course of duration in your life, in your business, in your job, there may be a lot of adverse events may arise. They do not plan for the adverse events which may arise in the midway. And because of that, they feel that their mindset is getting upset. Hopefully, most of you have seen that, entrepreneurs which they are not in a very good state of the mind. Most of the time you see that they are upset because of certain issues which have cropped up into the business. Couple of businessmen, you will see that most of the time they are seen, not very often, most of the time they are upset. And because of the reasons, there are some setbacks into the business. They lack working capital because they manage for the initial capital, but they forget that the capital is required till there are sales return coming from the market. They have uncontrolled expenses because, hello, am I audible? Right. So they have got uncontrolled expenses. As when they begin the business, they buy very expensive office, very expensive furnitures. They hire the people at a very expensive rate.
and they are unable to do the team management, because team management is a thing which is not taught into management schools. It comes only by the practical experience. And then they are unprepared for the marketing mishaps which are likely to happen into market. There may be certain products, certain campaigns, or certain things which market does not accept. So there are maybe issues related to marketing mishaps. So Gautam, who is there already made his mind into coming into the business, has got plus point like full enthusiasm, passion, finance, energy, and opportunities. He is also lacking the experience, plan for adverse events, mindset, working capital, and control experience, and team management. So now let us see what kind of issues Gautam may face when he is there totally into the business. So Gautam does not know how to manage the cash flow, because it is going to take, for any business, it is going to take certain time till the sales flow becomes very smooth and the payments start coming into the business. Because it is the payment from the customers that is going to run the business for a longer run. There may be issues related to brand name. What the Gautam proposed one brand name, somebody was already having that brand name, and ultimately there was a conflict with the brand name. There may be issues with the rent agreement. There may be hiring or firing the candidates. Gautam was finding it very, very difficult to find a right candidate in the salary bracket which he was offering to them. For getting a right candidate, the salary which he was supposed to offer was much more higher than his budget, which he has fixed already. So there was a firing issue also. Some of the employees he has to fire because they were not performing. And because of firing the candidates, there were a lot of issues created into the office. There were winning the trust of the customer were issues, because initially when the customers purchased the goods, they were not confident how the quality of the product will be. It was a mistake of the Gautam to make a strong follow-up with the customers and clientage. There were some issues related to partnership, and there were issues related to government liabilities. Some of the permissions the government were not giving, and some of the permissions which government were giving were not able to deal with it. And there were some certain issues related to the bribe also. So ultimately what happened? A young entrepreneur who started with enthusiasm and energy, ultimately he got confused, and what happened? He got trapped into a negative events. Now his thoughts are facing the negative event. He is facing some negative event which is leading to negative self-talk. ये क्या हो गया? इसमें तो मैं फंस गया. गवर्नमेंट तो मुझे परमिशन नहीं दे रहा है, तो मैं अपना आगे कैसे बढ़ाऊंगा? मेरा ऑलरेडी पर मंथ एक्सपेंसेस, मेरा 5 लाख रुपए का एक्सपेंस है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? So negative events and series of events, diverts his attention, and he starts with a negative self-talk. अब इसके जो थिंकिंग जो है नेगेटिव हो गई, वो थॉट्स, आज जो एक मेंटल हैबिट होती है आदमी की, अपने थॉट्स को मल्टीप्लाई करने की, उसको मैग्नीफाई करने की, साथ साथ में गौतम को ये भी फील होता है कि आई एम नॉट गुड एट दिस, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा. अल्टीमेटली होता ही है कि सुबह शाम ये जब नेगेटिव थॉट उसको परेशान करते हैं, तो गौतम का जो फोकस है, उसका अटेंशन है, इट गेट्स डाइवर्टेड. वेयर इट इज डाइवर्टेड? इट इज डाइवर्ट टू नेगेटिविटी. Gautam lends into overthinking, and he isolates himself. He does not want to talk to some other people, because then he feels that he is not in a position to manage his business very effectively. अब problem क्या होता है कि when he isolates himself, he creates more trouble for him, because isolation is giving rise to more amount of overthinking and negative patterns and loop of the thought. Ultimately, Gautam goes into a grief and guilt. Why he suffers a guilt? Because he thinks that he has made a wrong decision by entering into business. Ultimately, all this negative thought, they lead to negative emotions. Now, what kind of negative emotions Gautam is facing currently now? We can see here that Gautam thinks that he does not feel good. उसको ये लगता है कि what people are going to think of me. Because he started with a good enthusiasm, but ultimately he is not so successful. So people are going to laugh at him. Will I be able to survive? What will be my future? I should not have done this. I should not have done that. अब क्या होता है कि गौतम कुछ बैड डिसीजंस लेता है,
जो कि बिजनेस को काफी लॉस पहुंचाते हैं। इसी चक्कर में थॉट प्रोसेस में गौतम कुछ शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है बिकॉज ही वांट्स टू मेंटेन द फाइनेंस फ्लो। अब ये शॉर्टकट में गौतम का कुछ और पैसा फंस जाता है, अल्टीमेटली गौतम के बिजनेस को लॉस होता है। अब गौतम को रियलाइज होता है कि जो उसने स्टडी किया था कॉलेज में, ये तो इसमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। जो मार्केटिंग की टेक्निक सीखी थी इंस्टीट्यूशन में, यहाँ तो टोटली डिफरेंट सेगमेंट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। He is unable to perceive the customer needs, want and behavior, and he thinks that practically जो पढ़ा था उससे तो बिजनेस करना पूरा अलग है। It is equally difficult to face adverse events. It is more difficult to manage the negative thoughts, and he loses his focus, energy and attention in between. कोई भी बिजनेस स्कूल में या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में ये लोग कभी भी नहीं सिखाते कि हाउ टू मैनेज द नेगेटिव थॉट्स or how to cope up with the negative events which rise in between. So he loses his focus, energy, and attention in between. Now, as per the famous quote of Tony Robbins, your energy flows where your focus goes. Your energy flows where your focus is. So ultimately, what we are seeing here, Gautam ka focus और उसकी energy कहाँ divert हो रही है? It is going towards negativity. Now can we understand very well that गौतम का जो है उसकी एनर्जी जा रही है तो उसका फोकस कहाँ जाएगा? Ultimately his focus is also going to be towards negative side. Ultimately what will happen? He will lose his interest into business. उसको लगेगा कि मैं incapable हूँ and I cannot do it. So now what happens? His negative feeling, negative emotions, negative behavior, negative decisions, and also the negative action brings him the stress, anxiety, depression and issues with the mental wellness. अब गौतम जो है सारा दिन सोच में लगा रहता है, गौतम को नींद नहीं आती रात को, ultimately गौतम becomes irritable. गौतम now and then he fires on the staff unnecessarily. He shouts on everybody unnecessarily without any reason. Not because it is his fault, because Gautam feels that he is incapable, he is unable to manage. How many of you will agree to this statement, and how many of you have already shouted on staff without their fault? It is because your channel is negative, you start firing on other so that you want to let out your negative emotions on somebody else. Fine. Yes, very right. Yes, Tanmay, most of the businessmen have mental health issues. Perfectly right. An unfortunate part is that it is not been taught at the institutions. It is not taught into college. It is not taught into management programs. Perfectly right. So we are here as a Global Guru platform. We are going to teach you how to deal with it, how to cope up with negative emotions, how to cope up with negative loop, how to cope up with negative emotions, loop, behavior, and actions. What to do. So we have seen here that Gautam is trapped into the loop. 1 million rupees thought is that entrepreneurship satisfaction and happiness depend on the return of investment and profit. One is only going to get happiness when the profits are yielded by the business. But unfortunately, there is a constant tussle between the qualitative returns and the qualitative sustainability. And in this puzzle, many a times entrepreneurs stumble, their mental health deteriorates, and they cutthroat competition. Now I'm going to present with another shocking news, another shocking facts and figures, which has been published by the UK United States Institution of Mental Wellness. What they have found out that entrepreneurs, there are 72% of entrepreneurs, those who are directly or indirectly affected by the mental health issues, as compared to non-entrepreneurs, which the affect people are less. They are only 48% of the people, those who are affected by the mental health issues. Another shocking fact is that there are 49% of the entrepreneurs, those who are experiencing severe stress and anxiety, as compared to the normal people, those who are experiencing stress and anxiety are only 32%. So now Gautam comes to the dark side of the entrepreneurship. There are very interesting facts which have been published by the United States of Mental Wellness. Now, having own business can be fun, but due to the risk and insecurities, entrepreneurs are more prone to depression and anxiety.
By giving you this figure, I don't mean that you may not start your own business, but I just want to highlight that these are the things which an entrepreneur can suffer if he is not in a control of his mind, if he is not in a control of his status. So what are the things which entrepreneurs are likely to suffer? It is just that 2 times more likely to suffer from depression as compared to the normal people. They are more likely to suffer from ADHD, that is attention deficit hyperactive disorder, 6 times more. 3 times more likely to suffer from the substance abuse. Most of them just go for the smoking. Most of them, they just go with alcoholic drinks. Most of them, they go for a tobacco chewing. They are 10 times more likely to suffer from bipolar disorder, 2 times more likely to have psychiatric hospitalization, and more shockingly, 2 times more likely to have suicidal thoughts. Again, my intention is not to discourage the young entrepreneur entering into the business, but it is just to tell you how it happens, how to control mental thoughts. So what happens overall, Gautam-like people, they are unable to take a good decision. They lose their focus and attention on the business. They have got no feet, not feeling good to the office जाने की इच्छा ही नहीं होती. Not enthusiastic to talk about the clients के लिए बात करना है तो वो अपनी इच्छा उनकी uninterested हो जाते हैं. They suffer from the sleeplessness, anxiety, overthinking. They are deteriorating mental and physical health. उनको mental health के बाद में उनके stomach issues चालू हो जाते हैं. They lose productivity and enjoyment from the life. Ultimately, they lose their balance, mental balance. And we know already that your mind works best when your mind works better. So to deal with the situation, how to deal with such kind of situations, we are going to provide at Global Gurus. I am going to provide you the solutions to deal with the issues. There are such tried and tested methods, NLP tried techniques and methods which are there, which is going to turn your thinking to positive one. For the time being, just have a bad think that there is every negative event as a positive event. Look for the brighter side of whatever comes to your life. See the message in that incident. To look after these issues, to change your pattern of thinking, to come out of a negative loop, and to really focus on the business you are doing, and to really think and really go for your objective which you already decided and the goals which you already made. There is a detailed program named as Enjoy Life with Inner Peace Again, to be held on 1st June 2022. I've kept it on Zoom. Timings will be 7 p.m. to 8 p.m. The value of the program is 10,000 rupees. What you are going to get from this program, you are going to enjoy your life with Inner Peace Again. You will get improvement in your confidence, your enthusiasm. You will improve your focus on what's most important to you and your business. Learn to develop a positive thought pattern that will help you to elevate your business to the next level and will also improve earning and a better quality of the life. So do attend my program, Enjoy Life with Inner Peace Again. For those people, those who are sitting here in webinar, if you register now, it is totally free. Varun sir, please post my link into the chat box so that the people, those who are interested, then can join and can learn the new techniques, new methodology, and the techniques to overcome tension, stress, fear, and anxiety out of the business, and they can live much better life again. Thank you very much, boys. God bless you. In case if you're not able to get connected through the link, you can note down my number here and do WhatsApp to me. It's 909-908-8369. Thank you very much once again, all of you. Thank you very much. Over to Monika. Any questions, friends? You are feel free to ask here. Fine, Monika, you can take over. Yeah.
Wow. Yes, Tanmay has some question. What a presentation. Yes, anybody would like to ask anything? Yeah, Tanmay has one question. You can Okay, unmute. Tanmay. Sir, my question is that you said that in the business you are doing your own business, these issues will come. Sir, how to handle such intense situation in a peak time of your business? See, it is a life. It is a roller coaster we are enjoying. Yes. There will be always ups and downs. Yeah. If I tell you one thing, can take example of Ratan Tata. That's why there was a Maharaja of Air India in the beginning. What happened with him? He opened a plant into West Bengal. Ultimately, he had to quit West Bengal and shift the entire plant to Gujarat. Yes. He started with his dream project, Nano car. Ultimately, the Nano car could not function well. Now, what is happening at Sanand plant? They are now manufacturing electric vehicle. Yes. Now, this is going to be the biggest manufacturing plant in entire Asia. Those who are going to manufacture electronic vehicles, those who will be operated through electricity. See, every problem has got an opportunity lying besides it. What happens? Our thoughts are made, our mind is made in such a way that we divert our attention towards negativity. We think it is happening bad with him. मेरे साथ में बुरा क्यों हो रहा है? इसके भी बुरा हो गया, इससे भी बुरा हो गया. Ultimately क्या होता है कि एक thoughts जो है वो ओवरलैप होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, मैग्नीफाई होते हैं. क्या होता है कि अपना फोकस, अपना एनर्जी, अपना अटेंशन सब कुछ नेगेटिविटी की तरफ चले जाता है. उस कंडीशन में हम लोग ये नहीं सोच पाते कि इसमें क्या पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है. हमको दिखता नहीं है. It is there. It is not visible to us. Why? Because we are occupied with negativity. Yes, हमारा एनर्जी, हमारा अटेंशन, हमारा फोकस सब कुछ जा रहा है उसी में. रात को जब आते हैं थके हुए आते हैं, सो जाते हैं, बिकॉज वी आर आवर माइंड गेट्स टायर्ड ऑफ नेगेटिविटी. तो कहीं पर भी कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होने से इट इज नॉट विजिबल टू अस. इट इज देयर, ऑलवेज देयर. एवरी नेगेटिव इवेंट हैज गॉट सम पॉजिटिव इंटेंट बिसाइड्स इट. How you are able to deal with the negative events, that we are going to teach you into the next forthcoming seminars. सर फिर उसके लिए सर थोड़ा सा अपना मी टाइम भी दे सकते हैं सर, थोड़ा सा मतलब बिजनेस से थोड़ा फ्री टाइम करके भी सर अपना पर्सनल स्पेस दे सकते हैं सर. बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं भाई. अल्टीमेटली सबसे बड़ा बिजनेस क्या है आज की तारीख में? मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा बिजनेस तो तन्मय है. राइट और रॉन्ग? Yes, sir. You are the biggest business. Yes, sir. If you are not if you are forgetting Tanmay, then who is going to take control of your business? Yes, sir. Yes, sir. It is Tanmay only. Yes, sir. So believe in yourself. Have confidence in yourself. Okay. You are going to pass through all these negative events which are there. Okay, sir. Just try to relax and just see the positive intent which is there besides these negative events. Okay. Tanmay must register sir's webinar, then see the magic happening. Yes, ma'am, I registered. Okay, it's free of cost. Again, you are most welcome. Anybody else who is there, most welcome into my webinar. Yes, those have any questions, please go to the webinar and ask, because then we have lot other speakers also to speak, and then you just register and he will be with you, you know. Then it's your platform to ask whatever you really want to ask. Thank you very much, Tanmay. Can you share a link once again? I am not able to register. Yeah, please. Please, Varun. What a wonderful audience. Thank you so much. You can connect me for the remaining of the people. If you are not getting the link thoroughly, connect me on my WhatsApp number. You can note it down. So you can put it in the chat box. Why don't you put it in the chat box? Yeah, once again, I will put it. Fine. Thank you very much. If you are in Global Gurus, where we are going to put personal numbers also, so you can contact one-to-one also. आप कुछ भी कर सकते हो. That is up to you. किसी से भी बात कर सकते हो. But I'm 100% sure आपके
जो बिजनेस के सॉल्यूशंस हैं, आज हमारे जितने स्पीकर्स हैं, कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा ही मिलेगा. That is for sure. Great. When we say focus on your goal, means focus on your business. Don't look here and there. Just be in one direction. और आज जो मैं डायरेक्शन दिखा रही हूँ, that is global gurus के speakers की तरफ. You must look into these, so such wonderful, strategies, tools you are going to get. So अब जो आगे हम बढ़ रहे हैं, तो next जो wonderful speaker जो हमारे पास हैं, that is Miracle Maruti, who is a motivational speaker, a mind coach, and he has got the secrets of success of all kind of businesses. He is certified NLP, he's an author, motivational speaker, mind coach, and he has 5+ years of experience in different mind behaviors, and he's into meditation as well. And आप उनको Miracle Maruti क्यों कहते हैं, वो खुद आपको बताएं. He was with us in one of the Insta live. He explained why he called himself as a Miracle Maruti. And he Miracle Mind Academy जो ये चलाते हैं, that the life education is the key to success, and that is what his mission is. And his slogan is learn, practice, achieve. So Miracle Maruti, here you are. The platform is yours now. Hi everyone. Is it audible? Yes. Okay. Thank you, Monika ji. Thank you very much. And welcome all on behalf of Global Gurus. Okay, थोड़ा entertainment नहीं है, थोड़ा एक song को. Okay. Are you hearing the song? You're audible. You're audible. Audible, right? Yes. Song सुन रहे हैं? Song आपका आवाज आ रहा है? Yes, you're audible, Maruti. Yes, you are audible. पंखा है तंखा? नहीं मैं तो सब only. मोनिका जी आपका आवाज आ रहा है? मोनिका जी आ रही है आवाज, आ रही है मारुति जी. Okay. Let's hear this song. I will start the session.
Thank you all. Thank you all. Is it audible? आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है मारुति जी. Voice थोड़ी सी slow आ रहा है. Okay, now okay. धीरे है. धीरे. Yeah. No. Monika ji, now audible? Yes. Please Okay, start. right? Okay. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Monika ji, and thank you, Vinay ji, and thank you, all Global Gurus, giving me the opportunity to present in this wonderful session. And let's start my session. Let's everyone, all are welcome. Okay. Is the slide is visible? Monika ji and Vinay ji, is it visible? Yes, visible. Please go ahead. Okay. And hi everyone, welcome all to this wonderful session. Okay, let's see. Hello, some resound आ रहा है मोनिका जी? Sorry, go ahead. Is it now okay? Yes. Okay. Let's start that. In this session, I am going to present about secret of thoughts for young entrepreneur success. Okay, young entrepreneurs जो है उस early age में जो business and startup start करते हैं वो उसको young entrepreneurs कहते हैं. Young entrepreneurs are very essential. Why? Because we are the second largest population country in the world. Why? Because इतना लोगों को जॉब मिलना मुश्किल है और नामुमकिन है. It is tough to find job and सभी ड्रीम है, सभी का ड्रीम है एक जॉब, सैलरी हुआ जॉब करना चाहते हैं सभी. But it is tough to find salary job in present situation. Why? Because now population बढ़ता रहा है, but no, since from our childhood हमारे को कहते हैं अच्छे से पढ़ो आप अच्छे से सैलरी जॉब मिलता है. वही कहते हैं टीचर्स लोग कहते हैं, पेरेंट्स लोग कहते हैं, सभी लोग ऐसे कहते हैं लाइक अच्छे पढ़ो आपका अच्छी सी नौकरी मिलते, अच्छे पढ़ो अच्छी नौकरी मिलते बस. बट नो वन विल टीच अस आप पढ़ के एक एंटरप्रेन्योर बनो, पढ़ के एंटरप्रेन्योर बनो, आप बिजनेस डेवलप करो. नो वन टीचेस अस सिंस फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. दैट इज द मेन रीजन. बट everyone not choosing entrepreneur as their career. Why? Because we are, since from childhood we are not taught by about how to become entrepreneur. Okay, that is the main reason we are choosing salary job. Salary job choose करने के लिए सभी ऐसे करते हैं, but nowadays वो thought बदल रहा है. young entrepreneur के startups सभी boost हो रहा है. India government is also contributing to boost the young entrepreneurs by giving mudra loans, by giving startup loans, business loans. All private sectors are giving
10 lakhs loans minimum without any surety and to do business. This is a good side from the government side. Okay, but as an young entrepreneurs, okay, startups plays a major role in countries' GDP development. If you see the China GDP is a major contribution is done by startups only. But in India, major contribution by manpower. आप सोचते हैं सभी लोग फॉरेन में काम करके पैसा इंडिया को भेजते हैं. Why? Because India is good known for human resource exporting. जो skills है human resource का वो export करते हैं हम. But चाइना क्या करते हैं? चाइना goods को export करते हैं. चाइना human power को export नहीं करते. चाइना exporting goods. Why? Because all products from the world is made in China only. Why? Because cost of production is very less because of these startups. So मोदी भी कहते हैं गुजरात में all startups का एक माहौल सा बना दिया. Because if we startups develop means then our GDP also develops. That is a motivation of the government right now. Okay. Why? How thoughts is very useful to become young entrepreneur success. Today I will be discussing about thoughts. जो सोचते हैं, okay, वही बनते हैं. This is not said by me. सभी famous persons, personalities saying this, and let's start this. Yes, small सा question है, small सा आप answer दे दीजिए. Like how many of you are get disturbed by your own thoughts while focusing or doing any work? How many? Type me in the chat box. How many of you are disturbed by your thoughts? How many of you are disturbed by thoughts while doing any work? Okay, Varun, Raju saying that, Anu, Jaidev, okay, Tanmay, thank you very much. So, Abhipsa, everyone is disturbed by your thoughts while doing any work. आप जो काम करते हैं उसमें फोकस नहीं होता, जो थॉट मिडिल में आ जाते हैं. Okay, so this is a general tendency of the human mind. So कोई काम करने से एक थॉट को बीच में लाते हैं. So you will got disturbed by what you are doing present now. What आप वर्क में काम कर रहे हैं तो आप दूसरा थॉट आता है. Like for example, if you are working on the computer, doing some presentation, some job work, so suddenly आपका notification बजता है. सेल फोन में WhatsApp का notification आ जाता है. Immediately your focus goes to WhatsApp. So you got disturbed by your thought, actions and thoughts. Why? Because you are not focusing. Okay. See, these thoughts are there, always there to disturb you. So let's see one more question. Like how many are you are not disturbed? How many are not disturbed by your own thoughts? जो डिस्टर्ब नहीं होते वो चैट में मी लिख दीजिए. डिस्टर्ब नहीं होते, आपका ओन थॉट से डिस्टर्ब नहीं होते. So no one is there. So everyone got disturbed by your own thoughts because these thoughts are there everywhere to disturb you. आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें आपका बीच में वो थॉट आ जाते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं. आप you lose focus on that work and वो अधूरा रह जाता है, वो incomplete सा रह जाता है. Okay, let's see about me. My name is Miracle Maruti. I am a
a master in computer application and NLP practitioner. I'm a mind coach and mind counselor and meditation coach. I'm an author of one book called How to Control a Mind. I am founder of Miracle Mind Academy. Why? Because why it's called a miracle, Maruti, means I like miracles. I believe in miracles. I want to create miracles in others' life. That's why miracles is a unexpected great thing which is going to happen in your life. Like if you have sudden surprises in your life, how many you feel very excited to do miracles in your life? Everyone, right? So I'm here to create miracles in my life, and I am here to create miracles in all life. So I founded one academy called Miracle Mind Academy. In this academy, we will counsel and guide and give suggestions to people who are mentally disturbed and who are not unable to focus on their goals, who are have some mental trauma, and who are facing some challenges in their life. Why? Because challenge, if we face the challenges, there is a always saying that why I am facing this challenge, why other not facing this challenge. This is the first question raised by our mind. How to face this kind of situation? We will guiding the people and creating wonders in their life. Okay. And this is my book called How to Control a Mind, the ultimate solution to all mind disorders. Like mind is everything. If you have control of your mind, means then you will progress, success, every angle in 360-degree angle, you will have change in your environment. So with that intention, I've written this book, How to Control a Mind. This is going to available shortly in Amazon next month and shortly in Flipkart. Okay. And I will start with famous quotation called of my favorite Gautam Buddha. Gautam Buddha is a very inspiration to all the people. Like he's a trend changer, and he has proposed a new theory of system. Okay, this system is, it says that mind is everything. What you think, what you become. क्या सोचते हैं वो बनते हैं. ये गौतम बुद्ध का saying है. Like if we सोच positively about doing any work, it positive में आता है. If you do negatively, means it will, the result also be a negative. Okay. Yeah. For example, if you want to do any work, you would a business में start करना चाहते हैं, but एक दोस्त ने बोलता है, एक फ्रेंड ने बोलता है, उसमें बिजनेस में बहुत लॉस, और वो फ्रेंड ने इतना लॉस किया, वो कमाई अच्छे नहीं कर रहे. ओके, लॉट ऑफ पिटफॉल्स आर देयर. ऐसे दोस्त बोलते हैं. आप इंटेंशनली करना चाहते हैं, बट आपका दोस्त ने, सभी फ्रेंड्स ने, आपका पेरेंट्स ने डीमोटिवेट करते. Why? Because you strongly want to do that work, but unable to do it in actions, because आपने सोचते हैं उसमें इंटेंस ही नहीं है. इंटेंस मीन कितना इंटेंस है वो इम्प्लीमेंट करने का थॉट, वो इंटेंसिटी आपका माइंड में नहीं है. So you will not get success like this. So everything what you think, what you become. This is a famous saint by Gautam Buddha. And do you know that our father of nation, Mahatma Gandhi, has also told that a man is but a product of thoughts. What he think, what he becomes. Same thing Mahatma Gandhi also told. That is said, what you think, what he becomes. So जो सोचते हैं वही बनते हैं. आपका सोच is very important. सोच को कंट्रोल करना is very important. That plays a major success role in your business, in your career, in your
relations, in your whatever may be, आपका पूरा हर एंगल से हर कोने से आपको इम्प्रूव करना है तो आपका थॉट्स सही होना चाहिए. सही हो तो आपका रिजल्ट भी ऐसे होते हैं. ओके. एंड is know that one of the greatest scientists, Abdul Kalam, says that he says about more about dreams. ओ बिग ड्रीम्स करो, अचीव करो बोलते हैं कलाम ने. ड्रीम्स के बारे में सभी सेमिनार में एक्सप्लेन करते हैं. ये क्या बोला है अबाउट के थॉट्स. ए ड्रीम्स ट्रांसफर इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शंस. ओके. ड्रीम्स कैसे अचीव होते हैं? थॉट्स से अचीव होते हैं. थॉट्स को एक्शंस करने में वो पूरा ड्रीम का प्रोसेस होता है. ओके. दिस इज द फेमस सेइंग done by APJ Abdul Kalam. Okay. How many are you feeling inspiring? Like these are the famous saying by Abdul Kalam and Gautam Buddha and Mahatma Gandhi. So are you inspired by these quotations? Type me in the chat box. Yes, Anu and Jaypal Singh, Jaydev. Okay, thank you very much. Like these are the famous Srikant. Thank you. Aviksa, thank you. Like these are the famous saying by a scientist which inspire you. Like means this indicates that your thoughts is the main thing. Thoughts को control करे तो सभी आपको सक्सेस आते हैं. डेफिनेटली आते हैं. सक्सेस क्यों नहीं आते? डेफिनेटली आते हैं. एंड दिस इज द लेटेस्ट वन. वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो इसके पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने से, वो बड़ा सोचा, बड़ा किया, वो पहले किया बड़ा. ये थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक हेड. दिस इज अ फेमस सेइंग बाय धीरूभाई अंबानी. नाउ he is created one big entrepreneur kingdom of India that is called Reliance. Do you know everyone that he used to work in a petrol pump initially for money. So उसका सोच से वो सभी बिजनेस को इतना बड़ा किया. Okay. And this is also Vivekananda says that don't overthink. Overthink leads to negative thoughts. Negative thoughts is the main thing which will lead for overthinking. And also this is famous scientist now Vincent Paul. Change your thoughts, change your world. Okay. And how many are you want to change the thoughts? Life will be changed. If you want to change the thoughts, are you interested to change the thoughts? Type me in the chat box. Are you interested to change your thoughts? So all the famous people saying that thoughts is the main thing which will control your life. All thoughts is the main thing which will result your success, which will decide your success, which will guide you. Okay. Thank you, Srikant. Thank you, Vijay. Okay. See, लेटेस्ट एक बिजनेस एक सर्वे ने किया है. लेटेस्ट स्टडीज का सर 6000 थॉट्स इन ए सिंगल डे. सो दिस इज अ न्यू स्टडी. This is a new study by one of the famous psychological institute in US. So this is saying that every human are 6200 thoughts in a single day. Oh, सोचते. Okay. This is latest study. See how many among 6200 thoughts, उसमें thoughts से कौन सा thoughts है. For example 6000 thoughts में कैसा thoughts आपको सोचते हैं, हम categorize करते हैं. In next slides we'll categorize this 6000 thoughts. Thoughts कैसे होते हैं? Depends on your situations around you, people around you. What kind of situations are you facing? Are you doing a job? Are you running a company? Are you
Are you housewife? Are you doing any small scale business, some petty jobs like this? So वो thoughts around ही घूमते रहते हैं. Like if you want to have car को पेट्रोल डालना है, कार का पेट्रोल महंगा हुआ है. This is thoughts. Are you having debits? डेबिट्स में कैसे चुकाना है? मेरे इनकम कम है, उतना डेबिट्स कैसे चुकाना है, कैसे प्लान करना है, वो थॉट्स आते रहते हैं. एंड हाउस, यू डोंट हैव एनी हाउस, देन मेरा नया हाउस कैसे करना है, मेरा हाउस में रेंट बढ़ा रहा है हाउस ओनर, उसमें कैसे चुकाना है. ऐसे थॉट्स लाइक वर्क रिलेटेड थॉट्स, टैक्स रिलेटेड थॉट्स, आपका हेल्थ रिलेटेड थॉट्स, सब भी थॉट्स ये 6200 थॉट्स में होते हैं. ओके, ये अभी एक स्टडी किया ना 6200 थॉट्स, उस स्टडी में ये 6200 थॉट्स ये सभी का होते हैं. पर्सन के हिसाब से वो थॉट्स वेरी होते रहते हैं. ओके, नेक्स्ट ये लाइफ साइकिल ऑफ थॉट्स है. थॉट्स को एक लाइफ साइकिल बोलते हैं. लाइक थॉट्स इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. थॉट्स को एक प्रोसेस ऑफ एक्शन को थॉट कहते हैं. ये थॉट्स फीलिंग्स डेवलप करते हैं. लाइक फीलिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल आप रोड में वॉकिंग कर रहे हैं, सडनली यू विल सी एक पानी पूरी का शॉप. ओके, सो आपका फीलिंग आता है उसका खाने के लिए, उसके फीलिंग आता है उसका खाने के लिए. ओके, फीलिंग खाने के लिए to eat, and again what is your action? Your action, you will go to purchase that, approach the shop and purchase pani puri, and you will eat it and experience that taste. This is action. Again उस action से बनता है again thoughts. Like ये पानी पूरी अच्छा नहीं है, ये शॉप में अच्छा नहीं है, not tasting good. Okay, उस इधर फीलिंग बनता है, वो थॉट से अगेन फीलिंग बनता है, फीलिंग से एक्शन बनता है, एक्शन से थॉट्स होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, ओके, वही सोच है, वही थॉट है. ओके, थॉट कैसे करते हैं? फीलिंग में कन्वर्ट होते हैं, इमोशंस अटैच करते हैं. आसपास लोग कहते हैं आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास उतना रिसोर्स नहीं है, आप आर यू केपेबल ऑफ रनिंग दैट बिजनेस. ऐसा इमोशंस ऐड करते हैं, उसको ऐड करते. सभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, सभी डेफिनेटली आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस मींस यू विल डू एक्शन एंड यू विल स्टार्ट दैट बिजनेस. ओके, अगेन वो स्टार्ट करने के बाद आपको अगेन थॉट्स आते हैं. थॉट्स का ये चला ना रहे, ये बिजनेस में बहुत इन्वेस्ट किया बट वो आउटपुट कम आ रहा है, अगेन थॉट्स बनता है. और सर कैसा आई हैव टू रिपे दिस लोन. अगेन ये लूप है, इस लूप में हम रोटेट करते रहते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर रिलेट टू दिस? लाइक थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस. थॉट्स क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद फीलिंग आता है, फीलिंग होने के बाद एक्शन देते हैं, एक्शन होने के बाद अगेन थॉट्स होते हैं. दिस इज द साइकिल ऑफ थॉट्स. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रिलेटिंग दिस? लाइक हाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस? थैंक यू अनु, थैंक यू जयदेव. ओके, everyone are experiencing this. So this is one of the famous Albert Einstein. He is the scientist of the decade. He is a trend changer. He invented the formula called E is equal to mc square. It says that everything is an energy. Okay, everything is an energy. Thought is also energy. If you ज्यादा सोचते हैं आपका एनर्जी भी कंज्यूम होता है, आपका सोचने से आपका एनर्जी कंज्यूम होता है. So if you have more thoughts, आप 6200 थॉट्स डेली सोचते हैं तो
आपका एनर्जी कितना कंज्यूम होता है? एनर्जी इज कंज्यूम मोर. व्हाई? व्हाई? बिकॉज थॉट्स सोचने से वो एनर्जी कंज्यूम होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, थॉट इज आल्सो एनर्जी. एनर्जी मीन्स ज्यादा सोचने से आपका एनर्जी स्पेंड करते हैं. इसलिए इफ यू हैव इन द मॉर्निंग जब उठते हैं आपका थॉट्स वेरी फास्ट होते हैं, वेरी एक्यूरेट होते हैं, वो थॉट्स को इंप्लीमेंट करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू इवनिंग इन द नाइट, थॉट्स को करने के लिए एनर्जी नहीं होता. एनर्जी इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ थॉट्स. उस थॉट्स को कितना सोचते सोचते एनर्जी स्पेंड हो जाता है. आपका काम में स्पेंड होता है, थॉट्स में भी स्पेंड होता है. सो at the end of the day you are getting tired because of thoughts also. This is hidden truth which no one has known. कैसे टायर्ड होते हैं? बिकॉज ऑफ द वर्क. सभी सोचते हैं मैं काम किया, वो काम किया, ये काम किया, इसलिए मैं टायर्ड हुआ. बट रियली दैट इज नॉट द ट्रूथ. रियली इनसाइड में आप सोच किया वो कैसे करना है, वो प्रॉब्लम को कैसे करना है, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. ओके, ये मेरे पास इतना प्रोडक्ट्स है, वो कैसे बेचना है. ओके, ये थॉट्स है. ये थॉट्स को आप सोचते हैं तो आप एनर्जी स्पेंड करते हैं. ओके, एंड लेट्स सी सम फैक्ट्स अबाउट थॉट्स. सभी लोगों को फैक्ट्स, सम वेरी ट्रूथ्स अबाउट द थॉट्स. Always we are thinking about past, either we are thinking about future, not about present. Okay, हमेशा आप एक ब्यूटीफुल सा एग्जांपल लेता हूँ. ओके, ब्यूटीफुल सा एग्जांपल लेता हूँ. आप एक रोड में बाइक में जा रहे हैं. ओके, बाइक में जा रहे हैं. सभी लोग इमेजिन कीजिए आप एक बाइक में जा रहे हैं. बाइक में जा रहे हैं तो ओके, आप फुल 60-70 स्पीड में जा रहे हैं. So suddenly the road was some repair, some got damaged. Okay, so you are unable to control it. You will bike skids and falls on the road. You will also fall, and you will have some scratch on your legs and hands. And again you will take the bike and you will pass that way. Okay, you will experience some pain in the scratches and legs and hands. So this is the experience related. Now you experience some pain in that. So this is happen again after 2 months. Okay, you are supposed to travel in the same road. By that time you reach that point where you fell. What is your action? What is your action? Your action is like last बार मैं इधर नीचे पड़ा था, थोड़ा एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट हुआ. So I will be very cautious. माइंड बोलता है cautious रहो, थोड़ा स्लो जाओ. But right now present situation is that road got repaired and clean and smooth, very fine. But your mind insisted go slow. Why? Because your past thought is past experiencing you to take decision in the present. How many are you related to this? Always कुछ करना चाहते हैं, but your past thought बुरा, मेरे को ऐसे बुरा हुआ है. Okay, now I don't want to do this. Last time आपको बिजनेस में लॉस हुआ है. This time I don't want to do it, even though that business is successful. एक बार आपका फेल्यूर का फेस किया, again you want to do same kind of situation. Again माइंड बोलता है लास्ट टाइम ये किया, आपका फेल्यूर हुआ, लॉस हुआ, इस टाइम मत करो. But mind cannot analyze our present situation. Okay, everyone knows that वो past के thought के हिसाब से present decision लेते हैं. Okay, I will say one more example. Like आपका फ्रेंड्स है,
सभी को फ्रेंड्स होते हैं, सभी को फ्रेंड्स को सम उधार देते हैं. Some friends ask for, I need urgent money to pay something. You will give some loan, hand loan to them, but he unable to repay. You're not paying. Okay, you are avoiding them. Some other friends come to you, ask you about loan and hand loan. Will you give or reject? Tell me in the chat box. Will you give or reject? Will you give the loan or reject? Yeah, Tanmay says reject. Why you are rejecting? You are experiencing a past बुरा experience हुआ friend के साथ. Srikanth also saying it, reject. Past ने आपको बुरा experience हुआ giving hand loan, but right now वो आपका friend जो उधार मांगा है उसके analysis नहीं करते, mind analysis नहीं करते, just take it from the past, act it, that's it. Nothing analysis done in the present. If analysis करके वो genuine reason है okay, so mind cannot judge and analysis by that time. Okay, this is because you are always comparing with the past. Okay, let's take the future में जो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, but thinking like that, मेरा बिजनेस है तो ऐसा होता है, ऐसा स्टार्ट करूँ, वो फर्नीचर लाता हूँ, वो ऐसा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ, ऐसा सोच में रहते, बट एक्शंस में नहीं लेते, बट वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते. सभी को स्पाइडरमैन अच्छे लगते, सभी को हिटमैन अच्छे लगते, ओके, सभी को क्रिश अच्छे लगते. Why? Because they are the superheroes. Everyone want to become a superhero. Why? Because they usually do some unbelievable visionary actions. So everyone wants to become a Superman and hit. Iron Man, जितने लोग को बनना चाहते हैं, और आयरन मैन, सब आयरन मैन कैसे पर सुपरमैन, सभी लोग को ऐसा विजनरी आते हैं, लाइक वो करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, बट एक्शंस, नो एक्शंस नहीं होते. ओके, सो बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग एक्शंस इन द प्रेजेंट, you will not getting success. This is very important slide. Okay, just check it with how many times you are facing like these situations in present and future. Okay, like second fact is, like everyone used to do multitasking. सभी करते, अभी सभी जमाना मल्टीटास्किंग का जमाना है. लाइक लैपटॉप में एक करना है, फोन में एक करना है, राइटिंग में एक करना है. लाइक you will do by doing the every work, you will do, take your coffee, you will take your lunch, by seeing TV, by seeing laptop, you will complete your dinner. Okay, सभी ऐसे करते, multitasking करते. Do you know that secret? Multitasking will lead to unproductive work. Multitasking करने से आपका productivity नहीं बनता है. You are not a machine to do multitasking. You are not a machine. You are a human. Your mind is designed to focus one thing at a time, not more than that. That is a secret of the mind. Means if you don't focus on multiple things, एक के बाद करते जाओ, you will get the success. Okay, don't do multiple things at the same time, so that your productivity got hampered and you will not success. And this is also one of the famous fact, like there is a tough fight between your mind and heart. There is a two voices in you, like says एक says एक करना चाहता हो, नहीं ये मत करना, इसका इफेक्ट्स बहुत बुरा होता है, लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा होता है.
ये करने से आपको आपका तबीयत खराब होता है, ऐसा एक टू वॉइसेस होते हैं. ओके, एक टू वॉइसेस, हाउ मेनी आर यू एक्सपीरियंसिंग? लाइक एवरीवन एक्सपीरियंसेस. एक काम करने से टू वॉइसेस आपको फेस करना पड़ता है. एक बोलता है एक करना चाहता हूँ, एक बोलता है एक नहीं इसके एसोसिएटेड सम प्रॉब्लम्स है, इसके एक करने से ये रिजल्ट आते हैं, एक करने से ये रिजल्ट आता है. ऐसे टू वॉइसेस होते हैं. ए टू वॉइसेस फ्रॉम द हार्ट एंड माइंड. हार्ट से एक वॉइस आता है, एक करना चाहता हूँ, वो एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल लेता हूँ. एक आप पानी पूरी के शॉप में गए, आप पानी पूरी खाना चाहता हो. Why? Because that is a feeling experienced by your heart, the taste and flavor experienced by your heart. But mind says that right now you are in a busy, you are going to important work. Now this is not the right time to eat pani puri. One voice from mind comes. This is logical voice. One is heart, one is mind. These two voices are, how many are you experiencing these two thoughts? Type me in the chat box. How many are you experiencing me? Yes, Tanmay. I like super villains ties. Okay, he likes super villains. Okay, how many are you experiencing two voices before doing any action? Say, type me, Tanmay, Anu. Okay, Tanmay is like Hulk also. Okay, this is Hulk is also superhero. Abhipsa, Jaydev, thank you very much. Everyone faces this kind of situation, like heart and mind. This is also one of the fact that like everyone is facing. If you listen your heart, that is very good. Why? Because you will experience a pleasant of feeling. But if you listen mind, sometimes mind says correctly, but are you unable to follow mind? I will listen to heart. Sometimes heart says very correctly, okay, you will unable to follow, you will follow mind. So this will, you need to keep balancing between these two voices. Okay, I am here to teach you how to keep balancing between these two voices. Okay, this is a fact number 3. And fact number 4 is everyone are staying in a comfort zone. Everyone staying in a comfort zone, don't want to do pain related work. Like mind knows pain and comfort. Okay, pain means mind to try to avoid it. How many want to wake up in the morning 5 o'clock? But that is a pain to mind. उस टाइम में नींद सही आते हैं, सभी बोलते हैं उस टाइम पे मेरे को नींद अच्छे आते हैं, इसलिए I don't wake up. Like everyone says that, because success people says that wake up 5 a.m. you will plan your day ahead. सबसे प्लान हेड, आपका डे को प्लान करके आप में सक्सेस पाते हैं, डे को विन करते हैं. This is a comfort zone. Mind likes more comfort zone. Mind like pleasure. Then it's try to avoid pain. Okay. If you want to get success, means try to face pain situations. Try to come out of comfort zone. Then only you will get the success. How to try come out of comfort zone? If you have right actions, right mindset, you will come out of this comfort zone. And right will is also there to come out of the comfort zone. And right purpose, right vision, right why. क्यों कर रहे हो वो काम, क्यों कर रहे हो, right why होना चाहिए. Right why and right purpose, right mission, ये सभी होना चाहिए. Then only you will come out of this comfort zone.
otherwise आपका why strong नहीं है. For example, if you want to start a business, why you are doing this business? Why? Because I want to achieve financial freedom. मेरा पापा वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाया, मैं अचीव करना चाहता हूँ. वो स्ट्रांग वाई होना चाहिए. Then only you will come out of this comfort zone. Otherwise, you will stay there only doing small job, small business, like that only. So this is very important to come out of comfort zone. Then only you will get the success. I will teach you how to come out of this comfort zone. Okay, this is number fact 5. Like says that your world, Deepak Chopra, your world is simple reflection of inner world. जो inner में सोचते हैं वो outer world में बनते हैं. जो inner में सोचते हैं outer world में बनते हैं. Okay, this is very very true. Okay, आपके सामने क्या है? जब आपके सामने फोन है, लैपटॉप है, कोई देखे आपके सामने फोन है ना, देखे फोन किस चीज का, किस कंपनी का, है देखे, किस सभी चार्ट में डाले आपका फोन और लैपटॉप किस कंपनी का है, किस कंपनी का है. ओके मोनिका जी. Yeah. So see iPhone. If you have iPhone is manufactured by in iPhone factory. iPhone factory का डिजाइन एक माइंड में डिजाइन होता है. ऐसे होना है, कैमरा ऐसे होना है, कॉर्नर से ऐसे होना है, स्क्रीन ऐसे होना. एक आदमी का सोच है, वो रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट करते हैं. ओके, दिस इज सेइंग दैट आउटर वर्ल्ड इज इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन. ओके, ओके, थैंक यू. एंड एक्चुअली सम एनालिसिस करते हैं इसमें. लाइक थोड़ा 5 मिनट्स होता है. लाइक आपका 24 आवर्स होता है हर दिन का 24 आवर्स में डे 12 आवर्स होता है, नाइट 12 आवर्स होता है. उसमें 12 आवर्स में कितने लोग आप इसमें स्पेंड करते हैं? टीवी, न्यूज एंड फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर एंड नया जमाना है, वेब सीरीज का जमाना है. आपका टाइम को किल करने वाला ये सभी आपको टाइम किल करते हैं. आपका बुराई थॉट्स इंजेक्ट करते हैं. लाइक टीवी न्यूज, सभी किलिंग्स, सभी क्राइम न्यूज, सभी बुराई देखते हैं. अभी सभी ऐसे न्यूज फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, ट्विटर में. नाउ वेब सीरीज आए. इफ यू एंटर इनटू वेब सीरीज, ऐसे इंटरेस्ट कर देते हैं, पूरा वेब सीरीज देखने के लिए आप इंटरेस्ट होते हैं. Okay, now it is like an addiction. These addictions will kill your time. Okay, let's have some small analysis. Out of 24 hours, 16 hours और working hours होते हैं and 7 to 8 hours आपका sleeping hours होते हैं. उसमें eating को 2 hours जाते हैं and bathing and makeup को 1 hour जाते हैं and TV and social media को कितने जाते हैं? अब 4 hours जाते हैं. And maximum time spending right now is on social media and TV पे spend करते हैं people. And thinking about others में 1 hour जाते हैं. Gossip with friends 2 hours जाते हैं. Okay, and working time is only 6 hours. Out of this, maximum time we are spending on unproductive works. Try to avoid these unproductive works. You will focus more on productive works. And if you want to achieve success in your journey and acquire below skill, that skill is called clarity of thoughts. If you have more clarity of thoughts, you will get success. एक thought को achieve करना
उसमें क्लैरिटी होना है. Let's share about small example of young entrepreneur who is at the age 18 started one thought and implemented one thought and became a CEO of the world's largest hotel chain. That hotel chain is called Oyo. His name is Ritesh Agarwal. He is the one of the youngest CEO of India who is became multi-billionaire from a small village, very small village. He एक सोच को, one thought को he implement किया and became this. And one more youngster is he is Tilak Mehta. Okay, is 13 years old. He developed one app called Paper and Parcel and courier transport का app develop करके एक डब्बा वाला को यूज किया. मुंबई में डब्बा वाला वेरी फेमस है. और डब्बा वाले को यूज करके सभी कोरियर को ट्रांसपोर्ट करते with less price he used to transport its parcels across Mumbai using this app. Okay, very innovative, and he given Young Entrepreneurs Achiever Award. Okay, for more knowledge on thoughts, let's join my upcoming webinar on 3rd, 7 to 8 p.m. Okay, that name is Thought Mastery, how to control a thoughts. Okay, how to control a thoughts, how to science behind the thoughts, and what are the thoughts which triggers you, and secret formula to control thoughts, and steps to follow to worry free life. Okay, इसके साथ मैं बोनस में एक हाउ टू कंट्रोल अ माइंड एक बुक देता हूँ, एंड मेरा 2 पर्सनल काउंसलिंग सेशंस फ्री होते हैं. ओके, एंड ए टोटल वर्थ होता है 4,909, बट एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूँ. ओके, लेट्स register for my upcoming webinar on 3rd. Team, can you please post the registration links? Please register for my upcoming webinar on 3rd. Okay, thank you, Monika ji. Thank you, team. Thank you so much. Can you stop sharing screen, please? Wow. Thank you, thank you, thank you. सर ने तो पूरा वेबिनार ले डाला. So much of knowledge. Wow, it's amazing. अब आप ये देखो, if you go to his webinar, what you are going to get, you know, how he has segregated the days for your media and this thing, and how deep knowledge he's having. You must have seen. Great. Thank you. हाँ, इसीलिए मिरेकल मारुति कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं इतना सा नहीं, इतना सा मांगोगे वो इतना देंगे. Thank you so much, Maruti ji. Thank you so much. Thank you for such wonderful golden nuggets that you have given to us. Life is moving on. It is moving on, accepting the changes, looking forward for what makes you stronger and more complete. तो और strong बनाने के लिए और complete करने के लिए, now I'm going to introduce Dr. Sonal Mehta, who is a social scientist, and she's working towards making world a better place to live in. She has over 27 plus years of experience and has positively touched 57,000 plus human lives. And she uses NLP techniques and works on subconscious mind and bringing the best possible from every individual. And her philosophies of life is stay happy, spread happiness, and live, not just breathe. Over to you, Dr. Sonal Mehta, a social scientist. Wow, I loved the name.
Over to you, Dr. Sonal Mehta. Yeah, thank you so much, Monika ji. Can I share my screen? Yeah, please. Yeah. Ma'am, just give me permission to share my screen. You're co-host. Oh, it shows that. Okay, fine. I'll just. Yep. Yeah. Is my screen visible? No. Oh, just a sec. Is it visible? Yes. Okay, fine. So, hope your journey till now is must be very inspiring, motivating. If yes, type yes or just show a thumb in the chat box. So I'm sure it must be it is going very motivating thing. I just want to add little more value to it. सबसे पहले मैं शुरू करूंगी छोटी छोटी स्टोरीज के साथ, 2 स्टोरीज. एक तो वही जिनके बारे में मारुति जी ने अभी बताया, ओयो रूम्स के फाउंडर सीईओ मिस्टर रितेश अग्रवाल. Ritesh was a 16-year-old boy when he just thought about it कि जो accommodation मिलता है, like he loved traveling, तो वो जब भी कहीं बाहर जाता था, तो accommodation क्या comfort is not equivalent, is not directly related to the money charge. कई बार कम पैसों में बहुत अच्छा accommodation मिलता था and vice versa. So he just thought to develop an app कि ऐसा कुछ हो कि एक particular price में best possible मिले. For that he started Oracle Stays. उस Oracle Stays को और बड़ा बनाने के लिए उसने funding arrange की, venture capitalist ने fund किया, and finally Oyo Rooms was born. So this was Ritesh Agrawal's journey. वो 16 साल की उम्र में he had that knack of entrepreneurship. Now my second story is of a woman जो गांधी जी के आखिरी आदमी वाला एक फेमस कोट है ना कि जब तक आखिरी आदमी तक जस्टिस नहीं जाएगा वो जस्टिस नहीं होगा. तो ये फीमेल उस आखिरी आदमी के भी पीछे खड़ी हुई है, औरत है. So this is the story of a female, a Dalit woman who was married off at the age of 12. She was physically and mentally abused. She came back to her parents' house, जहाँ पर she was neglected, she was taunted कि वो ससुराल छोड़कर आई. That was the condition in late 70s. उसके बाद she committed suicide. काफी problem में थी, stress में थी. She tried committing suicide, but she was saved. Then she was sent off to her uncle's place in Mumbai. वहां पर एक garment factory में उसने stitching शुरू की. धीरे धीरे she learned the knack of it और उसने अपना business शुरू किया. She was the young entrepreneur. उसने अपना business शुरू किया और उसी समय she got to know about the government scheme कि 50,000 rupees the government is giving to women entrepreneurs. She applied for that loan and she started a new business. एक furniture का उसने शुरू किया. अब उस फर्नीचर वाले में कि इमिटेशन उल्हासनगर से इमिटेशन वाला फर्नीचर लेकर आती थी और बहुत अच्छे प्राइस में she used to sell that. So slowly she actually earned a lot during those time. तभी उन दिनों एक disputed property market में आई सेल के लिए. She took that property. She was advised against कि मत करें आप क्योंकि disputed है, being a female आप कुछ नहीं कर पाओगे. But she had confidence in herself, in her acumen. She took that, and finally the property was awarded to her by the court judgment. जो property उसने 2.5 लाख मिली थी, उसका प्राइस था 50 लाख, 20 times more. But she didn't stop here. She didn't sell it.
उसने यहाँ पर अपना एक तीसरा बिजनेस शुरू कर दिया, and that business was of construction. She took a JV और उसके ऊपर उसने फ्लैट्स बना के बेचे. This is how Kalpana Saroj Construction Company was born. धीरे धीरे Miss Kalpana Saroj, she rised the ladder of success. In that journey, she was made independent director of many companies. उन्हीं में से एक कंपनी थी कमानी ट्यूब्स. एक समय में बहुत बड़ा नाम था, आज भी है, पर बीच में कुछ समय के लिए थोड़ा सा ऐसे डामाडोल था. So in 2000, starting of 2000, the company suffered losses उनके internal issues की वजह से, and she was asked to take over. Kalpana Saroj, a woman, a Dalit woman, was asked to take over. She took over and she turned around, which is now being taught as the success story. It's a history. Dheere dheere, she earned respect all around. She was given the Padma Shri in 2013. She is now Miss Padma Shri, Kalpana Saroj. Uske baad she's the TED speaker, motivational, और Hollywood movie बना रहा है on our Kalpana Saroj, where Priyanka Chopra will be the lead. She will be playing her role. So इन दोनों में, रितेश अग्रवाल में और कल्पना सरोज में, या ऐसे इन सभी एंटरप्रेन्योर्स में क्या कॉमन? एक चीज कि उन्होंने रुकना नहीं सीखा. प्रॉब्लम्स आई, उनको फेस किया, हालात से समझौता नहीं किया, उसको अपनी किस्मत नहीं माना, आगे बढ़े. कुछ भी हो, कैसे भी हालात, रुकना नहीं है, एक एक कदम बढ़ाना. पहले जमाना है और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है. छोटे छोटे गोल्स अचीव करने हैं, लेकिन वो गोल अचीव करके रुकना नहीं है. अगेन आई रिपीट, रुकना नहीं है, और आगे वो बड़े एक एम तक पहुंचना है. You must be wondering what authority I have to say all this. Who am I to give you such big advices? So Muami, my dear friends, I can because I have. I too have had my share of struggles and achievements. Although my achievements are not of that magnitude which they had, but yes, I do belong to that community. I consider myself, I belong to that community who has made it to the top. So, give me opportunity, give me permission to introduce myself. Myself, Dr. Sonal Mehta. Excuse me, there's some problem. I'm unable to share my screen. I'll just stop that and start again. Yeah. So, this is Dr. Sonal Mehta in front of you. I am a founder of Sensed NGO, an Environment Weekly newspaper, and I feel proud to tell you that it is one of the 3 environment-based newspapers of India. A CBSE school in a rural village. इसके साथ ही I again take proud कि मैंने एक मंदिर consecrate किया, एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, and I've been chosen for that. I thank God for that. Apart from that, I'm an author, counselor, life coach, I'm a social scientist, and I'm related to each and every soul on this earth. आपके साथ भी. I'm related to each and every soul in each and every way possible. And apart from this, my entrepreneur skills, I have been awarded as the Golden Book of World Records, and मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है. I am the humble holder of 8 degrees, 6 diplomas, and 10 certificate courses. So this is Sonal Mehta before you. हम बात करते हैं अभी जो हमने 2 स्टोरीज सुनी, मिस कल्पना सरोज और रितेश अग्रवाल जी की,
कि उन्होंने कभी भी अपने आप को कम नहीं माना। उनकी आइडेंटिटी हमेशा उनके दिमाग में बहुत ऊंची थी। किसी भी सिचुएशन में रहे हों, कहीं से भी आए हों, बट दे नेवर थॉट कि इससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। तो हमारी आइडेंटिटी इट मेक्स आवर थॉट्स, जो हम सोचते हैं। कई बार आप सोचते हैं हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, दुनिया खराब है, दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, मैं सबका भला करता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरी तो किस्मत ऐसी है। ये हमने अपनी ये आइडेंटिटी बनी, इससे हमारे थॉट्स हुए, और वो थॉट बराबर बराबर एक लूप बनाते हुए इमोशंस बने, फीलिंग्स बनी, उससे हमारे डिसीजन और चॉइसेस बने। हम कई बार 70-80 हजार अगर हमें महीना मिलता है, मतलब ऑफ कोर्स हम जॉब करते हैं तो इतना मिल, इफ वी अर्न, हमें लगता है बहुत अच्छी लाइफ है हमारी। एक 2 BHK फ्लैट हो गया, एक हैचबैक हो गई, थोड़ा बहुत साल में एक आध बार घूमने चले गए, उससे ज्यादा क्या चाहिए। हमारी लाइफ हमारे हिसाब से सेट हो गई, हम वहीं सेट हो गए। फिर ये जो हमारी चॉइस है, उससे हमारा बिहेवियर बनता है, हम उन्हीं लोगों के आसपास रहते हैं, वैसे ही हमारी हैबिट हो जाती है, वही हमारे एक्शंस हो जाते हैं। एंड यू नो दैट अ मैन इज द सम टोटल, इट्स द एवरेज ऑफ द 3 people he look up to। तो हमारे जब आसपास वही लोग होंगे, हमारी कंपनी वही होगी, तो हम उतना ही तो सोचेंगे, वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे, वही मैनिफेस्टेशन होगा, और इस तरह हमारी डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। और ये ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई और नहीं तैयार करता है, ना हमारी किस्मत तैयार करती है, ये हमने तैयार किया, जो हमारी किस्मत बन जाती है। तो जो दिमाग है ना, ये डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है। हम जितना जानते हैं वो कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल जानते हैं, उसको चलाने वाला सबकॉन्शियस है, उसके पीछे अनकॉन्शियस, और सबसे ऊपर हायर कॉन्शियस है। पर अभी हम बात सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बस उतना ही आता है। सो दिस अ कॉन्शियस माइंड, जो हम रोजमर्रा में जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो हमें लगता है हमने डिसीजंस, वो कॉन्शियस माइंड जो ये डिसीजन ले रहा है, वो सिर्फ 10% है। इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। 90% नीचे हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये वो सबकॉन्शियस है जो हमारे बचपन से, जिसके बारे में बाकी ऑथर्स भी बात कर रहे थे, तो ये हमारे बचपन से, कई सारी हमारी सराउंडिंग से, हमारे DNA से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, वहां से ये तैयार होता है, और वो हमारे कॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट करता है, और हम उतना तक ही मांगते हैं, या इनफैक्ट हम मांगते बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको खुद पे ही विश्वास नहीं है कि हम वो पा पाएंगे। तो यहाँ पर आता है हमको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन। और मजे की बात ये है कि हम इस सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको सुखी रहना है, इफ यू वांट टू बी हैप्पीली सक्सेसफुल, देन देयर आर 2 ऑप्शंस। आइदर आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से बना लो, उसको ट्रेन कर लो, या जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है, तो अपने आप को वहां सरेंडर कर दो। अगर वो नहीं करोगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो यू विल नेवर बी हैप्पी। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, हमने कहा हाथ हिलाया, किसने हिलाया? हमारे कॉन्शियस। पर अंदर जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमारा लंग्स, हमारी किडनीज, जो हमारे आर्टरीज, ये सब कौन चला रहा है? जब हम सो रहे होते हैं, जब हमारे हिसाब से हमारा कॉन्शियस माइंड शांत है, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। थर्मोस्टेट मालूम है कि जिस पर चाहो उस पर आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हो। जब आपको ठंड लगे तो उसको ज्यादा पे कर दो, गर्मी लगेगी, और अगर आपको जब गर्मी लगे तो टेम्परेचर कम कर दो, ठंड लगेगी। ऐसा ही हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी फ्रेम करता है, लाइक थर्मोस्टेट। एक और एग्जांपल देते हैं।
सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, एक बार आपने उसमें डेस्टिनेशन डाल दिया तो सैटेलाइट की हेल्प से वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी, बेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट करके। कई बार देर हो सकती है क्योंकि जो रूट शॉर्टेस्ट था, इजी था, वहां पे ट्रैफिक व्हाटएवर, बट you will reach the destination no matter how long it will take. Similar is the case with the subconscious mind. You just have to feed it. एक बटन आपको वहां पे लगाना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और उसको बार 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 रिपीट करना होगा and you will reach there. इन लोगों का ऐसा दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, बट दे नेवर थॉट कि अगर हमने कॉलेज छोड़ दिया तो अब हमें कौन नौकरी देगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। They worked hard and they worked for 16 to 18 hours a day, in fact at times more, but they knew that they will reach somewhere and they are the multi-billionaires. एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी रिलेशनशिप. That relationship with money has to be decoded. हम एक्चुअली पैसे को क्या समझते हैं? सामने तो बोलते हैं सबके हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, बट मन में हम चाहते हैं. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, so our subconscious mind is not able to gather कि हमें आखिर चाहिए क्या. So we have to first decode कि exactly what we want. There is a cultural paradigm in our society. हमारे कुछ प्री कंसीव नोशंस हैं पैसे को लेकर, मनी को लेकर. पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो गरीब है, मजदूर है, मजबूर है, वो हीरो है, और जो अमीर है वो या तो सुखी लाला जमींदार है और या फिर स्मगलर. मतलब पैसा कभी अच्छे तरीके से तो कमाया ही नहीं गया. तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि पैसा, whosoever earn money, whosoever is multi-billionaire or millionaire, सही रास्ते से तो उसने किया ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है. और हम बहुत शरीफ हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, इसलिए हमारी कंडीशन ऐसी. We are so happy with that. ये हमारा कल्चरल पैराडिग्म है जिसे हमें शिफ्ट करना है. ये फ्रेजेस मेरे ख्याल से बचपन में हम सब ने सुने होंगे कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, कफन में जेब नहीं होती, क्या क्या लेके जाओगे, क्यों इतनी तू मैं है जीवन में. शांति का जीवन जियो, जो कमाओ उसी में संतुष्ट रहो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, और कि भाई हमें तो बस इतना ही चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए. ये हमारी सोच है. और फिर हमें क्या करता है? So now poverty is not the state of your bank statement, but it is the state of your mind, your subconscious mind, your unconscious mind and your conscious mind. ये आपकी state है. अब you can't expect calling money evil and then desiring it. अरे भाई, अपने लव्ड वन को, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को evil बोल के तो देखो, छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा. And what we do with money? पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो evil है, and all those phrases that we have got. अगर हम ऐसा सोचेंगे तो आएगा कहाँ से हमारे पास? First we have to decode a relationship. We have to make a congenial relationship, and we have to make money one of the most loved one of the most adorable person for us. So now, my dear friends, this is Dr. Sonal Mehta, the social scientist. And as you are attending my session, आपको कुछ gift तो देना बनता है. So now, one-to-one session worth ₹3,000 and the cumulative experience of 50 plus years absolutely free. Because मेरा wisdom, and I'm not that mature कि मैं 50 years की हूँ, but yes, मैंने इतना experience gather किया है. 50 से कम की उम्र में मैंने 50 से ज़्यादा का experience. And that nuggets that Monika ji speaks about, that diamond you will get. Apart from that,
a quality of life enhancing book. Subscribe Success Through Subconscious, absolutely free. इसमें मैंने बहुत कुछ जो कुछ भी मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है, like 25 plus professional years, now years काउंट कर रही हूँ एक्सपीरियंस, तो जो मेरे 25 साल से ज्यादा के प्रोफेशनल इयर्स हैं, उसमें मैंने क्या अचीव किया और कैसे अचीव किया, कैसे उसको अपने सिस्टम में लाया, इट इज ऑल देयर इन दिस बुक. एंड लिसन, योर एवोल्यूशन इज माय एंगेजमेंट, योर ग्रोथ माय कमिटमेंट, योर सक्सेस विल बी माय स्टोरी. वॉच आउट. मीनिंग आउटकम्स क्या होंगे जब हम मिलेंगे, बात करेंगे, आजकल तो जूम कॉल हम आराम से बात कर पाएंगे 1-to-1, तो उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? इट विल अनलॉक योर पोटेंशियल, इट विल एक्सपैंड योर स्कोप, एंड देयर विल बी अ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर डिजायर्स, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन. यही हम एक धोखा खा जाते हैं. हम सोचते कुछ और है, सोचते हम अंबानी जैसा है, अरे हमारे पास इतना होगा, लेकिन हमारे थॉट लिमिटेड हो जाते हैं, शायद नहीं होगा. हमारे शब्द, मेरे गरीब खाने में पधारिए, अरे गरीब खाना कहाँ है आपका, और हमारे एक्शंस अलग हो गए. तो जब इन तीनों चीजों में, चारों चीजों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तो इतना कंफ्यूजन है. यूनिवर्स बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. So first you have to be very right, very straight in what you want. Ask what you want. So now this was over and out for you all. This was Sonal Mehta for you. Thank you so much. Over to you, Monika ji. Monika ji, are you there? Okay. So yes, I'm there. Okay. Thank you so much. Thank you, everybody. Chia. Thank you, Dr. Sonal. It was a wonderful session. आप stop screen sharing करेंगे तो फिर Thank you, Dr. Sonal. Wonderful session. Just to the point. So nice. How many of you are really going to have one-to-one interaction with Dr. Sonal? Come on. Me. Yes, Tanmay. Wow. Very nice. Great. So when you are enthusiastic, when you are really want something to get, you really get it. यही हमारा माइंड कहता है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है. तो जब आप किसी, वो कहते हैं ना शाहरुख खान का डायलॉग, अगर किसी की चाहत हो तो पूरी कायनात तुम्हारा साथ देती है. Oh, wonderful, Nirmal. That's really nice. And the people, those who are saying, great. You know, we are such wonderful people around us, you know. आप कह रहे हो कि एक साइंटिस्ट भी आ गया, एक सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस भी हो गया, एक कमांडो भी हो गया, एक बिजनेस के टाइकून भी हो गया, अब सोशल साइंटिस्ट भी हो गया. अब क्या रह गया बताओ? Tell me, who is left? The person that is left, we have got two people, amazing people, different platforms, different point of views, different actress. Great. Yes. क्यों एक्ट्रेस कैसे रह गई? मैं बैठी हूं ना यहाँ पे. Thank
Thank you, Tanmay. Thank you for that prompt response. So none other than, I am going to introduce the next personality, who is none other than, ज्योतिष practitioner, and जो आपको ज्योतिषी और मतलब आपके बिजनेस का हर पहलू, हर कॉर्नर हमने कवर करना है, ठीक है। अब रह गया था ज्योतिष का, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट। यस, सो कम से कम ए तो एक जैसा था। तन्मय, गॉट इट। गॉट इट। ग्रेट। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस transformational catalyst. He is known as a transformational catalyst because he takes care of every area of your business. चाहे हम ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, he is there, and he is, what he does is he has 18 years of experience in training and development, and he will be making you understand about the business through ज्योतिष point of view के तरफ से, कौन से नक्षत्र क्या क्या नहीं, but wonderful strategies which are easily implementable, right? और मैं इस बारे में और क्या बोलूं, जब वो खुद बताएंगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि what he's talking about. And looking at him, you would be able to understand that he's a transformational coach, and he will let you free and let you grow bigger and bigger and bigger. So he's a freedom coach who makes you, he will be freeing you from all your tensions, anxieties, all those things. So over to you, Mr. Vivek. Thank you so much, Monika ji. Thank you so much. So I would like to say to all, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रातों से चल के मिलेंगे साये बाहर के। ओ entrepreneur, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साये बाहर के। So with this, I welcome you all to this Global Gurus Summit on Young Entrepreneur Success. I am your Vivek Saman. So today we will be talking about get free to grow big. Can you all see my audio? Can you see me? Monika ji, I think I'm not visible. You Okay. are visible. Okay, I'm not Very able to much see. visible. Good. So I'm a transformer. Thanks to Monika ji for giving me a wonderful introduction. I'm a transformation catalyst, a freedom coach, and a practicing Vedist Jyotish. And today, as a part of our interaction, I assure you success through an experience of freedom. Thank you, Ravindra. So I have got 18 plus years of experience in healing, meditation, and designing at different trainings, transformation workshops, one-to-one counseling and consulting. Now, speaking, can you please keep yourself on mute, please? Now, before we get ahead, let's interact. I would like to ask you, what factors do you think decide success for a young entrepreneur? Please put it on your chat. Whatever you think are the qualities or the factors that are required for you, which decide whether you will be successful or not. Good. Positive mind. We have 25 plus people. Please, I would like you all to interact. Right? I am here waiting for you. Right? So apart from positive mind, is there anything required? Good. See, let me add few more things to the positive mind. Any entrepreneurial initiative is going to be like this. It is not a one-man show. Even though you are going to take everything on your head, you are the one who is going to represent the company. It is going to be working hand in hand. It is always going to be a team effort.
whether they are directly reporting or virtually reporting, or it's a dedicated effort, but it's always a team effort. Let me tell you one secret. Previously, we used to say a person has stood on his own legs and risen to the sky. But in the current generation, that is a myth, because every success is a team effort, whether you realize it or not. Because even if a mother is preparing the meal for you, even if a wife is preparing a meal for you at time, there are so many factors that are involved. So many people have contributed to it. Is it not? So always it's a team effort. So the top 10 factors that decide the success for a young entrepreneur are here. One needs to be very passionate about what he wants to do. One needs to maintain the focus so that he does not get distracted. One needs to work smart. He needs to enjoy the journey. One needs to trust the intuition. Logic will not always help. Logic may be a start point, but the real push for the logic should be the intuition. One needs to be flexible to adjust to the situations and be persistent in getting ahead. One needs to rely on one's team and focus on the execution. Have high sense of integrity. And he should have a heart to contribute to the team, to the society, to the world at large, including to himself and his family. Right? Now, having seen that these are the factors that decide success, I would like you to get your attention back to our wonderful presentation of Vinay Daveji, in which he has mentioned, as per the UK's study, entrepreneurs are prone to mental health issues at 72%. That's whopping. That means out of every 10 persons who go about to do some entrepreneurial initiative, more than 7 people are going to get affected by mental health. Is it not something of a concern? Seeing this itself, people think this going for an entrepreneurship is a big risk. That is generally the tendency that comes in the moment they hear this fact. Then how to go about? That's why I said, कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के. So let's understand this context. What are really the issues that are really going to contribute to the 72% people's mental health issues? उतना क्या danger है इसमें? उतना क्या risk है इसमें? What are those factors that are going to affect your mental health? Let's together understand. It's not going to be a one-man show. We are together going to talk, right? I want your active contribution. Now you just tell me, if these are the factors, now introspect into your life for yourself. How many of these qualities, or what is it that's stopping you from building these qualities into your personality? Think it over. For a minute, think it over. What stops you from building these qualities into your personality so that you are a walking representation of this? Any person who sees either Ravindra or Tanmay or Abhipsa or anybody of you, or Vardhaman who has just recently joined, anybody who is on, when anybody sees you, they should be able to feel these factors emanating from you, from your presence, from your personality, from your behavior. What stops you from doing that? Let's understand this concept, right? Now, so what are these thorns, the content that we spoke about? What sabotages one's success? Can you think of? Now we have seen what the top 10 factors which will lead you to success. Now let us talk about challenges. What are the things that will stop you from getting ahead in life or being successful at what you have taken up? Some answers, please. I will give you some hints. What do you think? Let me see some responses. What do you think are, it's a lack of planning? Good. Okay. What are the things that stops you from success? Lack of knowledge, negative environment. Okay. Anything more? Okay. Tell me, what are the mental issues or mental bondages that stop you from success? Mental bondages. Something like fear,
Something like anxiety, right? What people think and say, that fear. Good. Anything more? Okay, very good. Stress. Now you just tell me something about the physical challenges or physical limitations that may stop you from getting success. Come on, let me see. Say, for example, if you have gone through some accidents, that will stop you from getting ahead with your success. If you are handicapped physically, or if you are having some chronic ill health, or if you are having some pains, back pain, very much correct, Tanmay. Good. I think we are in tune now. Good. Lack of energy. All this will contribute to your lack of success or stopping you from getting success. Okay, can you think of some psychological barriers which stop you from getting success? There are the different levels of thorns, you know. कांटे बहुत गहरे भी होते हैं. Compelling reason? Yes, lack of compelling reason. Thanks, Nirmal. Anything more? Anger, great. Or come on, look at your own lives. Because the more you interact, the more benefit you will get out of this session. I am trying to give my best, but for you to receive the best, you need to interact. Lack of confidence, very good. Freedom of the unknown, yes, all these different kinds of fears. Now, there are something called emotional bondages also, emotional barriers. Yes, Ravindra, lack of focus, emotional imbalance, very good. Now, there are some emotional barriers, like as you said, anger, sense of revenge, right? Those who are having some entrepreneurial initiative into trading, they trade with revenge to cover up the loss, and they will get into more loss. You know, we'll get more into it. Now, can you tell me something? You would not have heard this before. Are there any karmic bondages or karmic barriers which stops you from getting success? Think it over. Think it over. This is something new. I will open up the paper to you. Yes, it's new. You would not have heard of it. Can you think? Okay, let me not strain you further. Here, one does not get to experience real success in life due to all this, you know, karmic bond, relationship bondages. If you do not have a proper relationship with your team, if you do not have proper relationship with your partners, if there is lack of trust issues, lack of understanding between the members in the team, that also leads to failure, is it not? Now, there are some of the mentioned things which I mentioned, and there could be many more in that, etc. Right? You might be surprised. What are these? Are there so many kinds of bondages that you are all facing it? The thing is, you are not realizing. They are all there in the background. Some of you may say, no, sir, all these are not there. I'm a clean slate. I'm good to go. Wonderful. I really very happy for you. Let's delve deep further. Now, these are not the only bondages. Bondages are many more. Many more kind of bondages are there. We will explore. And all these bondages are interlinked. If you have a psychological bondage called an inferiority complex or a superiority complex, it will lead to some issues in the relationship with your team or the partners or the stakeholders, sponsors. Is it not? One kind of an issue leads to other. And which one leads to another one? It's just a mesh. It is a mesh and it will create a mess. Getting the point? Now, having seen all this thorns, these barriers, ये आते कहाँ से? The $1 million question, $1 million question is, where do these bondages and limitations come from in the first place in our life? Nobody wants this, right? None of you would want it, but they are there, or they keep coming on your way. Why do this come? Any guess? Any guess? Make a guess, no negative marking. Why do this come? Where do this come from? Fast. No wrong answer, right? I think as some of you might be thinking, you are right. It comes from here, the mind.
It comes from the mind. All of these bondages, all of these limitations come from the mind. And from the mind, thoughts is one part of it. Thoughts is one part of it. The essential source of all this is this mind. Now, whose mind? Now you will say, sir, ये आपका picture है, आपका mind से हमारा problem आता है. बिल्कुल नहीं. That is your mind which creates problem to you. Okay? It is your mind which creates problems to you. Now, if it is so, now let us say, how free are you from all these bondages? Let's just have a simple check. Kitna free hai? By the way, why do you need to be free? Why do you need to be free? Have you ever thought? Because freedom is one of the most taken for granted thing. That you will realize as we keep progressing with the session, you will realize that. But anyway, just have a thoughtful look into yourself. How free are you? More forward to grow big, to succeed, to grow big and succeed to your fullest potential. How free are you? Free of all those thorns. Some of you may be having some kinds of those sabotaging factors within your mental framework. Somewhere in the background, they may keep coming based on the situation. Are you angry at this moment? But there are some triggers which can make you angry. Right? Are you fearful? No, you are quite happy, enjoying the session, these wonderful sessions. But if I get you to some situations, you may start fearing. That means fear is already there, some trigger, it's waiting for trigger to come out. Is it not? So we will understand this, whether how free are you. Just with this little baby elephant's example. This elephant is held back, not by the puny rope. The rope, you are seeing this little rope, not by its rope, but it's by belief system. Now you just tell me, how strong is this baby elephant? We all know it is so strong that within us, it can go and throw any of us by holding and throwing it at a huge distance. It has that much strength and capacity. No doubt about it. But can it move a few steps? Think it over. Can it move a few steps ahead by its own in this situation? Why? What is stopping it? This little rope, this little chain. If it really wants to pull it, is that an issue, you tell me? One which can throw you and me to some far away meters, just like this, with its trunk. Is that a big issue? Unplugging that stick and the chain and running off. Is that an issue? But the elephant is held back not by this little rope or chain, but by its belief systems here. Now I ask you, are you too? These are all the different bondages, within it. All these different kind of bondages that we have seen before. All these are the ones here within the brain, which are, in this kind of condition, what success can you predict for this person? If you look at this picture, to this person, what kind of a great successful award can you give? Understanding the point. Now, let us see. Before we get further ahead, which one will you choose to be? If I give you these two options, all of you please respond. Don't be a mere spectator or mere listener. I want interaction. Now you just tell me, which one will you choose to be? Acha, Shrikant wants to be one. Okay. Anybody else? Okay, Varunji wants to be one. Tanmay, Ravindra, and all others. No, acha, just tell me, how many wants to be number 2? None, right? Everybody wants to become one, right? Why so? Why is it so? Answer yourself. What is the difference between 1 and 2, and why you have chosen 1? Nobody is choosing 2. Because one is an all-rounded balanced growth.
Getting the point? One is all-rounded balanced growth. One is all-rounded balanced growth, and two is it's a skewed imbalanced growth. Getting the difference? Now imagine these different areas of your life. What are the different areas of your life? One is a professional life, that is a career, personal life, health, family, friends. So many different aspects of your life are there, right? Think that each of these is a muscle. This is a profession. This is your personal life. This is your, health. This is your back is your some such. Imagine different areas of your life as different muscles in the body. Now reflect for a moment. Is your life balanced or skewed? Okay. Now you just tell me, is your life balanced or skewed? I want you to write. How many of you think that your life is balanced, and how many of you think that your life is skewed? Okay. I am also clear now. Acha, Tanmay, skewed. Okay. Anybody? What is your current state of which one you will choose to be? You say all said one. But look at your current life. What is it now? Come on. So you all know that is not fully one. Though we want to be one, it is not fully one. Okay. Let's accept the fact. Right? And ruk jana nahi. Right? Remember that. While you are reflecting it, now I would say. Now, this is a very important slide for you. Are your life wheels in peak state? Now we have been speaking that we want to reach somewhere. That somewhere is the peak success that we were thinking of. Now, for you to reach peak success, that's a journey, right? Any journey has to be taken up through a vehicle, right? Now, this vehicle would have wheels. Can you imagine a wheel with square-shaped wheel or a trapezium-shaped wheel or any other shape other than a circle? Tell me. Can you think of some vehicle with an ajibo-garibo shape of wheels? One is a square type, and there is a trapezium, and there is a triangle, and there is an isosceles triangle, and one is a circle. Circle is also kahin pichak gaya, kahin phool gaya, right? It is suppressed at one place, it's bloated at one place. Just imagine such a vehicle with 4 different kinds of tires in different shapes. Now you tell me, with that vehicle, where are you expecting to reach, and where would you reach? And most importantly, when would you reach with such a vehicle? Put yourself in that place. Getting the point? Now here comes the picture. This is the wheel of life. In the wheel of life, there are different areas like business and career, finances, health, family, friends, your romantic life, your personal growth, your fun and recreation, and your physical environment. Some of you have been mentioning the negative environment around is also a factor for your failures. How is the physical environment around? In all these factors, if they are all full to the best of its state, then we will have a more or less equal, balanced life, which leads to a proper circular wheels. Now, if you have proper circular wheels on your vehicle, don't you stand a better chance to reach to your destination? Don't you stand a better chance to go there well in time or before time? Is it not? And most importantly, won't you think your journey will be very comfortable in such a car with these kind of vehicles, this kind of tires, this kind of wheels? Tell me, would it be a yes or no? If you have these kind of wheels in your vehicle, circular wheels, fully serviced, fully filled up with proper air, tell me yes or no. Yes, Tanmay. I really appreciate, Tanmay, your enthusiasm. I want you all, because see, I am giving you my best.
Whether you get the best or not depends on you. Whether you take the best, right? So interact. We are not charging, right? Each other. So let's connect. Let's relate. Let's interact. Now, after having, thank you, Nirmal. After having looked at all this, rate yourself. How happy and satisfied are you in each of these areas of your life? Make it a note yourself mentally. How much you will give out of 10? Finances, what is your state? Maybe health speak wise, what is your state? Business and career, what your state? Have a self introspection and have a self rating. Now, having done that, each of you put which is your strongest area. All of you, whatever you have arrived at, what do you think is your strongest area in this? Or strongest area, and put a number there, whatever number you have given. In the responses, because this is going to be important for the next slide. We are going deeper to understand the things. Very good. Tanmay, 7. 7 in what? Ravindra, 1. Okay. But put your strongest area. What is your strongest area and what is your rating? In the same way, put your weakest area and put your rating next to it. Maybe like Ravindra said 1, it is the weakest area. What is that area? Some such area is there, right? So, just to progress ahead further, let me ask one. Now you have your strongest area of your life, you have weakest area of your life. Now look back at what are your thoughts, behaviors, and patterns in the strongest area of your life. And similarly, look at all the thoughts, behaviors, and patterns in the weakest area of your life. Right? Look at both of these. Getting the point? You yourself are seeing the difference. The way you think, the strongest area, the way you think in your weak area, the kind of behaviors you have in your strong area and the kind of behaviors you have in your weak area are very much evident to you yourself. Getting the point? I'm helping you introspect to know where the thorns are so that we can unplug those thorns. Right? So what are the kind of bondages that limit your progress? You're getting some idea. We have spoken about all the factors that are required for our success. Then we have seen all the different factors which were contributing or stopping us from getting succeed, that is making us fail. So what are those factors, whether they are really there in our life or not, we are checking it up. And we are all observing there are some or the other kind of an issue that is stopping us from progressing ahead in life or soaring high in life or living our life to the fullest or becoming successful to our fullest potential. Is it not? So reflect on how you are living your life and why are you living your life. This is very important. So you are seeing for yourself the way you are behaving in your strongest area and the way you are behaving in your weakest area. That is how you are living your life, right? But why are you living like that? All these questions nobody would have asked in your school, college, and unfortunately nobody back at home also asks you. Right? That is why we mentors, we global gurus are here to help you look at your dark spots and put light on it so that things will all be clear and you can start soaring high in your life. So how you are living your life and why? Check back. And how balanced your wheel of life. You have seen it for yourself. So you are all now convinced, more or less extent, that yes, all fear of society, yes, that is also one of the fear. There are so many factors that are stopping you from what you can be, whether you wanted to acknowledge or not. But as we have seen through a couple of slides, now we are arriving at, yes, there are some issues in your life which are stopping you from getting ahead. If I am pulling back somewhere, or maybe we'll look at in the next slide, we'll understand it more. How many of you want to be free? Now you know that there are some bondages or some limitations that are stopping you. How many of you want to free yourself? Just tell me. How many of you want to free yourself? Good. Very happy to see your enthusiasm, Tanmay. And how about others? Ravindra, yes. Anybody more? So others will just want to continue to be in that bondage.
See, if you are not saying yes to free yourself, it simply means, yes, I want to continue to be in bondage. Is that what your answer is? If it is not yes, it means no. And that is your choice. Let me tell you, this is one of the habit, or this is one of the pattern that we get stuck. If you don't say yes, thinking about me, maybe it will be yes later. In life, it does not happen. No decision is a decision. No choice is a choice. Please make a note of it. Getting the point? If you're not making a choice, if you're not saying a yes to something, it simply means it's a no. It is silent no. But at the end of it, it's a no. Getting the point? Start taking responsibility for your lives. Say yes, say no. See the results. If you're going to sit on the bank and wants to cross the river, you can only keep dreaming. Mungeri lal ke haseen sapne. You need to get wet, right? You need to learn. You need to get failure. You need to get ahead still further. It is for that we global gurus are here for you, right? Now, most of you want to become free, right? Now, let us understand this freedom. How to become free? Now, you just tell me, all those who wanted to become free, can you please help this little baby elephant to become free? Can you please help that little baby elephant to become? You know, once it becomes free, what is its capacity? You know it very well. No words are required. It can do wonders, right? Once it becomes free, it can be a vehicle for Maharaja. Kings will not sit on donkeys. Kings will always sit on elephant, right? That's a royal animal, right? But in this condition, can it be? Can it reach to its royalty with this? Now, Srikanji says, remove the chain. Okay. Now, before getting that, what is the solution for this? The solution lies in mindset. Where does the solution lie? It is in here. The way we can take it off those chains are with that instant mental freedom technique. We can. Now, the rope, dikta hai that rope, but it is held by his invisible thought. We all know, just with a strong shift of his leg, it can not only break the chain, but it can even unhook the stick, which is holding it back. Is it not? It's not at all a big task for him. But what is stopping? The thought here is stopping him from getting ahead. Now, what can be the solutions for this? Now, as Srikanji has said, remove the chain. Anybody else? Any other solution? Right? I know. I will proposing two solutions to it. Solutions. One is increase the rope length. How does it sound? Now, this rope length is maybe a meter. So it can go around in a radius of 1 meter or to 100 meters or to 500 meters length of the rope. Can you imagine how much area it can move around and it can rule that much area? Realizing the point. If I can increase the rope length, what would happen? It loosen the bondage. And if you cut the rope, that's another solution. If you cut the rope, what would happen? What would happen? Its limitations will be broken free, and that's going to be a permanent solution. If you increase the rope length from 10 meters to 20 meters or 30 meters, it is still in a bondage. It cannot go beyond 30 meters. But if you cut the rope, it is completely dependent on its capacity and its enthusiasm and its capability. Right? Now, we entrepreneurs also, whether you realize it or not, check back into your lives. Is it right or not? Answer me if it is yes. Yes. If your heart says yes, I am also in a similar situation, put yes. If you say no, I am already cut the rope, say no. I will help you further go up. Getting the point? Now, the question is, which one to implement?
Whether you will increase the rope length or whether you will cut the rope. What do you want to do? All those active members, can you just respond? What would you do? Would you like to increase the rope length or would you like to cut the rope? Some answers, please. I'll give you an interesting twist to it. Acha, Tanmay wants to cut the rope. Anybody else? Also, Ravindra also wants to cut the rope. Almost, I think everybody will go for cutting the rope. Now, let me tell you the secret. Let me tell you the secret. That's an obvious answer, cutting the rope. Okay. Thank you, Chandrasekhar ji. A different answer. Know yourself. Okay. Now, which one to implement? You say cut the rope. And how to implement? Do you know how to cut the rope? That ropes are invisible. Where will you cut it? Okay. But let me tell you, increasing the rope length is not the right answer to every solution. Cutting the rope is also not the right solution to every situation. Getting the point? Neither of it is the right solution for every situation, for everyone. What is right for Srikanth may not be right for Tanmay. What is right for Tanmay may not be right for Ravindra. Or all these 24 members out over there. The solution could be different for different situations and different problems or different issues or different bondages. Sometimes we need to increase the rope length. Sometimes we need to cut the rope. Depends. Now, how to implement? That's another important point. Having known this situation mein ye karna hai, in this situation I need to do this. How do we implement it? $1 million question, right? Now let me take you to the most important part of it. Common minds who achieved kingly status have freed their minds. I want you to understand this. Look back at your friends and family circle. You have a big list of friends and relatives in and around, some of whom you feel are worth looking up to. They have achieved some success. Look at them, closely look at them and observe. They were also a common mind. They were also common people before they could achieve that status which is inspiring you now. Common minds who achieved kingly status have freed their minds. Right? Agreed? Now I'll ask you one question. When will you get free then? Huh? When will you get free? Okay, great. So look at your maternal uncle Tanmay. He has been a common man before he achieved a success that you are getting inspired by him. Now, when would you like to become one like him or maybe even better than him? Who will decide? You think I should decide as Jyotishi? Huh? Or you will decide? Look into your life. Answers are there, not here. I will only help you get those answers out. Okay? Now, Vivek Samala says always one thing. Free your mind. Free your mind. And let me repeat. Free your mind. Now you will ask me, sir, you are saying free your mind, free your mind. Free your mind कहने से free हो जाता है क्या? कुछ करना पड़ता है, right? कुछ करना पड़ता है, क्या? Google? ना. So, I very cordially invite you to my signature program for one day. It's going to be on 3rd at 8 o'clock for nearly maybe 150 minutes to maybe a bit more, depends on our interaction. We will have a session on what? But many of you may be taken aback. 15,000. क्यों दे नहीं सकते? What for? That is for your freedom. Is it not? Just check back. Look back at your lives. Do not take a decision yet. Look back at your lives. What is stopping you all these years from taking off into your life and be that inspiration to all your near and dear, all your circle of influence? You can be at that. You can be a star in your area by which people can get inspired. अरे वो तो ऐसे देखो ये कैसा था कैसा बन गया. How they have freed their minds and achieved the kingly status. For that, can't you invest some amount
into yourself, onto your growth? Think it over. I know it is costly, but before you decide further, let us actually know, milega kya? What is it that you are going to get by coming into this signature program? Very powerful program, let me tell you. You know, the key takeaways from the program would be these techniques to heal your past. Now, your past kahan se aa gaya? All these fears, anger, bondages, whatever you have seen in the third slide, right? After the factors that leads to success, what is stopping you from success? You have seen a big list of things. Those are just a little. There are many more and many more kind of bondages. Where are they mostly coming from? They are not right here. Even if they are here, the source of them was in your past, which you are carrying it forward like an inheritance. Let me tell you one little thing. This thought which I'm going to share now has struck me just now. I never ever thought this thought before. Let me tell you, that's oven fresh, which I'm going to deliver it to you for the first time. We have, if at all we want inheritance, where do we get our inheritance from? From our elders, from our ancestors, from our parents. They leave some jaidat, zameen, paise, whatever, zevrat, whatever. We call it as inheritance. Some, there are another invisible inheritance, the value system that they give, and all the habits that they have given, the good habits, all these are also inheritance. Now, shall I tell you? Just now it has struck me. There is another person who is inheriting his things to you. Guess? That is, you yourself are giving an inheritance to you yourself. How? All the past that you have accumulated, you are inheriting it back to next moment and next moment and next day and next week and next year and next life. Who is giving you all that? All the habits that you have acquired, all the impressions that you have acquired, all the belief systems that you have acquired, all the negative thoughts you have acquired, or maybe even the good thoughts, good beliefs, good discipline, and all those things that whatever you have acquired over the period of time, you are carrying it forward to week after week, day after day, week after week, month after month. Is it not? So you are also giving inheritance to yourself. Yes or no? I also realized just now. See, if we interact, so many new things, bulb gets on. That's why I say, open yourself and receive the best. If you don't interact, how will it be? See, by sitting over here, I have received one flash. Hopefully, you also would have received many flashes back into your life, some wow moments. Now, getting back to the point. So, how many of you are ready to register? Tell me, how many of you want to register? Yes or no? So let Varunji, let people decide whether they want to join in this program or not. How many of you want to? Let me tell you, the techniques to heal your past, the knowledge to understand your present is one, and the tools to craft your future. Very good. Now, one most important thing is we all want a good future. Is there any person who does not want a good future? Everybody wants. But how do you go about doing it? How do you go about creating it? All these are linked. Your past, present, and future are all linked in this moment. What you decide decides your future. What you don't decide decides your future. If you keep silent, it decides your future. If you make noise, it creates your future. If you ask questions, it creates your future. Whatever you do at this moment is what you're sowing for your future. If you decide to go for it, you are sowing your future. If you decide not to go for it, you are sowing your future. Baad mein dekhenge, you are sowing your future. Is it not? Now, you will have live meditations to clear off most of the junk that is filled up out over here. And we will also have detailed question and answers based on specifics. On your case to case, we can have detailed question and answers, which I will guide you through. Right? I know this 15,000 may be a big amount for some of you or maybe many of you. I understand because I have also gone through. But let me tell you, the most important thing in life, which we always do the nazarandaz, we always take it for granted, is freedom. If you don't have freedom and if you have everything, what life will you live?
If you don't have anything, but you are free, you can achieve anything, man. You can achieve anything in your life. But if you are not free, whatever you have achieved, that also you cannot relish. Yes or no? Look back into your life. So what price can you put for that freedom? It's invaluable. Let me tell you, it is priceless. Agree? How many of you agree to this? All those who agree, there will be a surprise for you. How many of you agree that freedom is invaluable? Freedom is priceless. Anybody? So Dell is ready to register for this. Magical Monica, good. So you also believe that freedom is priceless. Thanks, Vijay. Very good. At least I'm not charging you for giving your opinion whether freedom is priceless or not. Good. What happened, Tanmay and Ravindra? No responses now? Bimla Saxena, very good. Very good. Now let me tell you. This is Global Guru Summit, and I owe a lot of the good things of my life to all my gurus. Shri Guru Bhyo Namaha. To all those gurus who have contributed, with whose blessings I am here today to be able to be of some service to you all. So now, in their name, right? In their name, in the name of my guru, in gratitude to all my gurus who have contributed to this Viveka today, is only for guess. Now I'll give you a last option. Probably this is the last question for you. How much do you think you can invest for this kind of a magic in your life, for this kind of a freedom in your life, which you have never experienced? First, remember, $299. Okay. Anything more? कुछ और ज़्यादा बोली हो जाए? Any option? Okay. Very good. Anything more? Anything would like to quote anyone more than Nirmal Bhai? Oh, wow, 1999. Good. Good. Thanks. But let me tell you one thing. All the priceless things in your life are right. So in the name of my gurus, from this Global Gurus platform, I offer this program, but much more than 15,000 for one day. I'm going to give this experience of freedom by helping you heal the techniques of the past, understand the present, and craft your future with beautiful meditations for completely free. Happy? Now don't hesitate even for a second to register for our seminar. Let's take it further ahead. Having started this great journey of understanding, yes, there are some issues. Having known it, then we'll go about treating it, then we'll go about taking off. Soar high in life. What I said? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों से चल के मिलेंगे साए बहार के. जब आपके साथ विवेक का हाथ हो और विवेक का साथ हो, मिलेंगे साए बहार के. Is it not? So I would request my team to please again put up the link to register, the Google Forms link, so that they can register. And also, as a bonus today, the Monika ji has been asking me, Vivek, why don't you, most of these buddies are young entrepreneurs. Why don't you give them some helping hand by giving a one-to-one session for at least half an hour from your time? So I have decided, yes, maybe it's a voice of my gurus. So I'm going to offer you a half an hour one-to-one, completely free of cost, so that you can discuss your personal issue that is stopping you from getting to success, and I can help you. And if you need more help, you can even discuss it further. So you can join my tribe on WhatsApp or Telegram. Please put in those links so that once you join in, I will send you those links by which you can register for a free one-to-one for some time, right? And I will give different options also, whether you want a mental related thing or a Vedic Jyotishi thing or whatever consultancy, I will give you the choice also to you. Okay. Thank you, Tanmay. That's great. I would want everybody who is valuing their freedom to register it. What more you want? It's given for free, right? So with this, I really thank you all for giving me this
opportunity to be of some service to you all. Kindly please share the links to the team. Thank you so much. Back to you, Monika ji. Thank you so much for this. Wow, 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 wow. Thank you, Vivek ji. Thank you so much, so much, so much. You know, can you just switch off the speaker's view? Share screen बंद कीजिए ताकि मैं अपना सुंदर सा चेहरा सबको दिखा सकूं. यस, अब मैं आपको सही बात बताती हूँ. गूगल बाबा के पास सबका इलाज नहीं होता, सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता. इसीलिए ये जितने भी आपको नगीने दिखे ना, इन सब के इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस हैं. That is why they are here. That is why they call as gurus. So, how many of you are ready to give up those inheritance जो बात की थी, वो rope जो काटने को कौन तैयार है? मुझे दिख रहा है कुछ लोग, typical लोग जिनके दिख रहा है, जिनके आंसर से पता चल रहा है, they all are ready to fly on. I'm telling you, you are getting actually awareness of roots. And when you make your roots very, very strong, you are ready to fly, and you will create your wings and you will fly, right? So last but not the least, I've got a wonderful lady with me, and she's मतलब इतना interesting topic है कि शायद आप लोगों को बहुत मजा आएगा, and it will be eye opener for everyone, right? That is the last speaker of the day today. And she is none other than, she's a life coach for moms. अब आप लोगों हम तो नहीं है, हमारी तो wives है, but still this is again for you all, you know. And the topic is mom to mompreneur, जो females जो अपने आप को give up कर देती हैं कि अब baby हो गया, हम क्या business कर सकेंगे, but that is the way to go ahead. This is the society where you all are, you know, think that men and women, they are equal, right? So here I introduce RITU Bhardwaj, who is head of sales and marketing, and she's a life coach, and she has a passion about doing things. And through her own journey, she has created few strategies, few hacks, so that she can encourage all those females जिन्होंने अभी स्टार्टअप शुरू नहीं किया, जो सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं, they can actually relate this thing to Ritu. So over to you, Ritu. Come and just show your magic. So much, Monika ji. Before I start, you are not audible, Ritu. You are not audible. Am I audible now? No, it's better. Yes. Okay. Thank you so much. I was just about to say that before I begin, if I can request the team to mute others, because then, you know, it creates some hindrance. So yeah, thank you so much, Monika ji, for this wonderful introduction. Gratitude to you. And thank you so much for inviting me in this Global Gurus. So love you all. And thank you so much. Good afternoon, everybody. And thank you so much for being here till now. अभी सुबह से दोपहर हो चुकी है, आखिरी स्पीकर तक आप लोग बैठे हुए हैं. So I am sure you are here for real knowledge and you are very, very serious people. So thank you so much for all that. So hi. My name is Ritu Bhardwaj. Monika ji ne mera in the chat box. How many of you love your mothers? Type me in the chat box. Okay. Thank you so much. And how many of you want to see your mothers happy and successful? Type me in the chat box. Thank you so much. And how many of you are mothers here? Can I see any mother? Any mother in the room? Okay. Thank you so much. So before I begin, I
I just wanted to share my introduction. So with your permission, can I have your permission to share my brief introduction? Thank you so much. So my name is RITU भारद्वाज. मोनिका जी ने आपको मेरे बारे में थोड़ा बताया है. I am head of sales and marketing. पिछले 12 सालों से मैं marketing, sales and training में हूँ. And so far I have trained more than 3,000 plus women into personal development as well as sales. तो मैं उन्हें हेल्प करती आई हूँ कि वो अपने खुद के पैरों पे खड़े हो जाएं और वो खुद अपने एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट कर पाए. सो आज का जो टॉपिक है, that is, let me share my screen. Is my screen visible? Okay, so the topic is what mothers want. हम लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा ना, what women want, और ये बहुत ही ज्यादा जोक की तरह इसको लिया जाता है what women want, और लोग कहते हैं कि women क्या चाहती है ये तो भगवान ही नहीं जानते, तो हम क्या जानेंगे, right? But I'm sure कि by the end of this session आप कहीं ना कहीं इतना तो जान पाएंगे that what a mother want. And I know यहाँ पे बहुत सारे young entrepreneurs हैं, but my dear young adults, अगर आप अपनी mothers को, अपनी girlfriends को, अपनी wife को empower कर पाए तो ये society भी empower हो जाएगी. How many of you agree with me? अगर mothers empower हो पाए और mothers ने अपने अपने passion को monetize करना सीख लिया तो definitely हमारी government की, हमारी country की economy भी आगे बढ़ेगी. Right? So this is a really important topic and I'm mother, isn't it? So let's begin. Can you just type in the chat box what are the challenges any mother face? Because मैंने रिसर्च किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि बहुत सारे उनकी मदर्स क्या चैलेंजेस गुजरती हैं. अगर आप लोग बता पाएं कि क्या क्या चैलेंज हैं जो एक मदर गुजरती है या फिर आपकी मदर ने क्या क्या चैलेंजेस गो थ्रू किए हैं अपनी लाइफ में, इफ यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स. Come on. I think the chats are coming very slow. I can see Sonal's message now, Monika ji's message now. Thank you so much. So, okay. So actually में जब मैंने अपना रिसर्च किया था तब मैंने 100 से ज्यादा women से और उनके जो बच्चे हैं उनसे 100 women and 100 kids उनसे ये क्वेश्चंस पूछे थे और मुझे कुछ आंसर्स मिले थे जो सिमिलर पैटर्न था. So मैं वो सिमिलर पैटर्न आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. एंड टू माय सरप्राइज, भले अर्बन हो या फिर ये रूरल हो, हर जगह मदर्स की ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम थी. क्योंकि मैं महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में भी जाके ट्रेनिंग देकर आती थी और शहरों में भी मैं जितने मेट्रो सिटीज है वहां पे मैं ट्रेनिंग दिया करती थी. सो सबसे पहला जो चैलेंज है दैट इज हार्मोनल चेंजेस. यस, एवरी मदर गोज थ्रू हार्मोनल चेंजेस और तब हम लोगों को ये लगने लगता है किसी की बॉडी वेट गेन हो जाता है, किसी का वेट लॉस हो जाता है, किसी के हेयर फॉल या फिर कुछ भी बॉडी हेयर ग्रोथ, इतने सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस. लेकिन उसकी वजह से असर क्या होता है, हमारे खुद की बॉडी के साथ साथ हमारे बिहेवियर में असर होने लगता है और हमें लगने लगता है दैट वी आर गुड फॉर नथिंग. सो ये सबसे पहला फैक्टर है. सेकेंड इज सेल्फ डाउट. क्योंकि बहुत टाइम तक अगर एक मदर अपने बच्चे को रेस करने के लिए करियर में ब्रेक ले लेती है तो उसके मन में बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं. मे बी अब वो बात नहीं रही मेरे में, मे बी अब बहुत देर हो चुकी है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? ऐसा होने लगता है कि सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं बहुत ज्यादा. देन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑन अदर्स. बिकॉज हम लोगों के अंदर हम लोग डिपेंडेंट हैं मे बी अपने हस्बैंड्स पे, अपने डैड पे या किसी के भी ऊपर, तो हमें लगने लगता है कहीं ना कहीं कि हमारा कॉन्फिडेंस अब उतना रहा नहीं और अब वो बात नहीं रही. आप लोगों ने की एंड का देखी होगी ना, उसमें ये हमेशा बोला गया कि इट्स नॉट अबाउट वुमेन और मैन, इट्स अबाउट की एंड का. तो जो भी फाइनेंशियली एम्पावर्ड रहता है वो डेफिनेटली ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है. होता है ऐसा. सो जब मदर्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहती हैं तब उनके साथ उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. आई होप यू ऑल विल एग्री विद मी. एंड देन नो मी टाइम. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि तू बहुत कुछ करना चाहते हैं, इतने सारे आइडियाज है माइंड में जिससे लगता है कि हाँ इससे तो बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है या फिर मैं अपने आप को पैम्पर करूं, खुश रहूं, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट टाइम कहाँ है? सारा टाइम तो दिन भर काम में और बच्चों में निकल जाता है, राइट? सो नो मी टाइम. And feeling neglected. How many of you agree
जितनी भी मदर्स हैं, कई बार आप लोगों की मदर्स ने कहा होगा कोई मेरी सुनता नहीं है, तुम लोग सब अपने अपने में बिजी रहते हो, मेरे को कौन ध्यान देगा, राइट? ये बहुत बार होता है कि मदर्स स्टार्ट फीलिंग निग्लेक्टेड बिकॉज उन्होंने तो करियर में ब्रेक ले लिया था, लेकिन उनके आसपास के लोग और तेज भागने लगे, उन्हें ऐसा लगने लगता है, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनकी फैमिली सब तेज भागने लगे और उनकी दुनिया रुक सी गई है, इसीलिए शी स्टार्ट फीलिंग निग्लेक्टेड। एंड मैटरनिटी लीव फियर, अगर जब कोई मदर जो होती है, जो बच्चा प्लान कर रही है, उसके मन में दिन रात एक ख्याल रहता है कि कहीं मैटरनिटी लीव की बात मुझे निकाल ना दे। आप लोगों को ये हैरानी होगी, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा होता है इंडिया में कॉमन। आईटी कंपनीज आर कंपैरेटिवली सेफ, जहां पे फिर भी थोड़ा मैटरनिटी में सेफ रहता है, 6 मंथ्स का मैटरनिटी ब्रेक भी मिल जाता है, बट नॉन आईटी फर्म्स में ये बहुत फेस होता है। कैन आई टेल यू समथिंग? I was one of them. I was forced to resign after my maternity break, जबकि I was the best performer of the country throughout my career. मैं हर कंपनी में हमेशा एज एन बेस्ट परफॉर्मर रही थी, हर बार अवार्ड विनर रही थी। मैंने हिस्ट्री को उठा के देखा, मैंने उनको बोला कि आप किस बेसिस पे मुझे बोल रहे थे, दे वर लाइक हम लोग अभी प्लान ही कर रहे हैं कि कुछ जो भी है उनको हम लोग कट डाउन करें, कुछ डिपार्टमेंट्स को कम डाउन करें, तो कैन आई रिक्वेस्ट, आई थिंक यू नीड मोर टाइम फॉर योर चाइल्ड नाउ। So I was like literally shattered because मैंने बहुत टाइम दिया था अपने डिपार्टमेंट के लिए। So जब मैं ये बारे में बात कर रही थी, तो लास्ट टाइम मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला I was forced to change my department also। तो कई बार जो प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है, तो जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, उससे हमें शिफ्ट कर दिया जाता है। ये सब बहुत होता है। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन, बिकॉज इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो लगने लगता है मदर को कि वो एक डिप्रेशन में है, बट एक्चुअली में ये रियल डिप्रेशन कई बार होता भी नहीं है। इट्स नॉट क्लिनिकल डिप्रेशन, इट्स जस्ट अ मैट्रिसेस पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन व्हिच इज अ फेक डिप्रेशन। यू नो, जैसे आपने एडोलेसेंस सुना होगा ना, टीनेजर में होता है। अगर यंग एडल्ट है तो आप जानते हैं कि टीनेज में ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ रहा नहीं लाइफ में, कभी बहुत खुशी होती है, कभी बहुत गुस्सा आने लगता है, हर बार कोई ना कोई उतार चढ़ाव से हम गुजरते हैं। सेम इज विद मैट्रिसेस, मां बनने के बाद भी ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं, व्हिच इज अ फेक डिप्रेशन। एंड मम्मी गिल्ट, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारी मदर्स मम्मी गिल्ट में ही रहती हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती हैं और इसीलिए खुश नहीं रह पाती हैं, राइट? सो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। जब हम लोग माँ बनते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमारे साथ जुड़ता है, which is a relationship with our child, right? It's most beautiful and precious relationship जो भगवान ने हमें दिया है, जो हमारे ही बॉडी का एक हिस्सा था, हमारा खुद का बेबी। Then why is it कि इतनी सारी मदर्स पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, पूरे वर्ल्ड में जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन में चली जाती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं? That is because we are, we have developed a beautiful relationship with our child, but we are missing on other relationships. And what are those relationships? The relationship with work, that's what we are, missing. And then relationship with our hobbies, relationship with good sleep, relationship with old friends, relationship with our better half, and the relationship with your own self. How many of you would agree with me कि हम लोग माँ बनने के बाद ये सारे रिलेशनशिप मिस करने लगते हैं? क्योंकि जब कोई एक लड़की होती है, उसके पास ये सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो काम भी कर रही होती है, उसके पास हॉबीज भी होती है, उसके पास फ्रेंड्स भी होते हैं, वो घूमने भी जाती है, वो अपने स्पाउस के साथ भी घूमने फिरने और बहुत एंजॉय करती है। लेकिन उसके बाद धीरे 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 ये पेटल्स झड़ते जाते हैं, बिकॉज उसकी एक ही प्रायोरिटी रह जाती है, वो है उसका बच्चा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि उस समय वक्त की नजाकत को देख के वो जरूरी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन सब रिलेशनशिप्स को मिस करने लगती है और ना चाहते हुए भी वो चिड़चिड़ी होने लगती है, और फिर घर वाले सब बोलते हैं क्या हो गया है, इतनी चिड़चिड़ी होने लग गई है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड एग्री विद मी, राइट? ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन है बहुत सारी मदर्स के अंदर। आपने ये मूवी देखी है इंग्लिश? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस मूवी इंग्लिश? एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मूवी है, जिसमें कि श्रीदेवी जी ने बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले किया है, जो का नाम है कि वो एक एंटरप्रेन्योर है। वो मिठाइयां बनाती है, लड्डू बनाती है,
और सबको बांटती है और सब बहुत पसंद करते हैं, बट उसको खुद को अपनी वैल्यू ही नहीं पता होती है, क्योंकि घर वाले, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, उसको निग्लेक्ट किया जाता है, उसको इंसल्ट किया जाता है बात बात पे, और वो हंस के टाल देती है, बिकॉज उसकी लाइफ में प्यार की कोई कमी नहीं थी। कमी किसकी थी? रिस्पेक्ट की और सेल्फ आइडेंटिटी की। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो कई बार बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, दुखी भी हो जाती है, लेकिन फिर वो उसको टाल देती है। एंड देन क्या होता है कि वो यूएसए जाती है अपनी सिस्टर के पास किसी काम से, and then she end up exploring her own self, and she understood that sometimes the family members don't understand what we are going through, and that is the time we have to help our own self, because nobody can help you better than yourself, right? तो हम लोग क्या सीखते हैं इस मूवी से? कुछ लेसन्स हैं। सबसे पहला लेसन, love yourself, because nobody can love you when you don't love yourself. So try to understand कि सेल्फ लव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं चिप्स खाती रहूंगी और मूवी देखती रहूंगी बिकॉज मुझे ये पसंद है, नहीं। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को हर घड़ी इंप्रूव करते रहना, हर बार अपनी कमियों, बच्चे से प्यार करते हैं तो बच्चों को कैसे छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना, हम लोग हमेशा केयर करते हैं उसकी। वैसे ही हमें अपनी केयर करनी है, जहां पे भी हम कम गिर रहे हैं वहां पे हमें आगे से आगे अपने ऊपर काम करना है। दैट इज सेल्फ लव अकॉर्डिंग टू मी। एंड इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। हाउ मेनी ऑफ यू वुड एग्री विद मी? बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई, अब शायद वो बात नहीं रही, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पहले करती तो करती, अब पता नहीं अब क्या स्टार्ट करूं। it's never too late. यहाँ पे जो शशि जी जो करेक्टर है, उनके 2 बच्चे होते हैं, and she was with from very good family background and all, but still she start working on herself, क्योंकि उसको लगने लगा कि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसकी वजह से उससे कॉन्फिडेंस में भी कमी आ रही है और इसकी वजह से वो कुछ और नहीं कर पा रही है। और अपने इंग्लिश के लेसन्स में ही तो उसे रियलाइज हुआ दैट शी इज एन एंटरप्रेन्योर एंड शी इज समथिंग। एंड उसकी जो ब्यूटीफुल से प्रोडक्ट्स है जो वो बना रही है, विच इज स्वीट्स, जो इतने डिलीशियस है कि वो हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है सब जगह, ये उसको बाद में समझ में आया। And then empower yourself. Yes, you have to empower yourself so that others can love you. अगर हम सबसे मांगने चले जाएंगे कि मुझे love me, respect दे दो, nobody will respect us. How many of you would agree with me, right? अगर हम मांगने चले जाएंगे कि हमें रिस्पेक्ट दो, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। हमको खुद को रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और हम अपनी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? अपने आप को कर्ज किए बिना, बार बार बोले बिना मुझ में ये कमी है, मुझ में ये कमी है। इससे अच्छा है कि हम अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, राइट? एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस is the most precious experience, and make sure that you are making most of it. अगर ये करेक्टर शशि चाहती तो ये वहां जाके यूएस में घूमती फिरती एंजॉय करती, बट उसने वहां जाके इंग्लिश के लेसन्स लेना स्टार्ट किया और फिर डे बाय डे जो पूरा महीना उसने सीखा, हर बार वो इंग्लिश मूवीज भी देखती थी, नोट्स बनाती थी। शी वाज फुल्ली डेडिकेटेड एंड शी वांटेड टू मेक मोस्ट ऑफ इट। अब ये ट्रिप तो कभी जिंदगी में नहीं बोल सकती, बिकॉज नाउ शी इज एम्पावर्ड। उसके खुद के पेरेंट्स, सॉरी उसके बच्चे और फैमिली खुद देख के सरप्राइज हो गए थे, मेरी मम्मी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है। और उसके हस्बैंड को भी सरप्राइज हुआ था कि उसके भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम बाहर निकलते तो हम लोगों को लोग हमारी वैल्यू करने लगते हैं, और लास्ट में ही हमारी फैमिली हमारी वैल्यू करती है। दिस इज वेरी दिस इज ट्रुथ एंड इट्स नॉट बैड, बिकॉज कई बार जब हम लोग हाई होते हैं तो हमारे स्पाउस ही होते हैं जो हमको मे बी बराबर करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द रीजन कई बार हमारे स्पाउस या हमारी फैमिली जो है वो लास्ट में वैल्यू करती है। दैट डजंट मीन दैट दे डोंट लव यू, दैट मीन्स दैट दे आर स्केयर्ड कि आप कहीं गिर ना जाए। नाउ आप में से कितने लोग हैं जो फाल्गुनी नायर को जानते हैं? ये नायका के सीईओ एंड फाउंडर हैं और इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 49। यस, मैं एज की बात कर रही थी ना। शी वाज 49 एट दैट टाइम। शी वाज मदर ऑफ 2 एंड नाउ शी इज इंडियाज रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर। सो पॉसिबिलिटीज आर देयर। एंड व्हाट हैज हैपेंड विद माय कर्सर? Okay, so now Suchi Mukherjee, LimeRoad की CEO and founder, she is also mother of 2 and she is most successful businesswoman। और वो Indian entrepreneur है जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट LimeRoad बनाई थी, एंड उनकी एम ये है कि इंडियाज लार्जेस्ट एंड इनफैक्ट एशिया की लार्जेस्ट मार्केट प्लेस बनाए which is only for women। How beautiful is it, isn't it? So she has not even empowered herself, but she is aiming to empower other women also। So अब
बात ये आती है कि बहुत सारे लोग हैं, ये जो हम मुझे आके भी बोलते हैं कि कितना मुश्किल है बिजनेस क्रिएट करना, क्योंकि सेल्स ही नहीं आती है, सेल करना नहीं आता है, सेल करने से हम डरते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी विमेन है जो अपने पैशन को मोनेटाइज नहीं कर पाती, राइट। हम लोग सेल्स से डरते हैं क्योंकि हम सेल्स पर्सन से ही डरते हैं। हमें लगता है यार सेल्समैन तो हमेशा कुछ ना कुछ चिपका के चला जाता है, तो हमें वैसा नहीं बनना। इसलिए मुझे अपने बिजनेस में बहुत अच्छी बिक्री कर सकती हूँ, मैं फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ, पर मैं अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकती, और इसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। अब 2017 में एक सर्वे हुआ था जिसमें कि 5 वेज बताए गए थे व्हाई वुमेन सेल्स sabotage their success. Number 1 is that they are being afraid of self promotion. Yes, they are being afraid of self promotion. कई बार ऐसा होता है कि हमें ये कल्चरली सिखाया जाता है कि सेल्फ ब्रैगिंग मत करो, अपनी खुद की तारीफ मत करो, राइट। इसकी वजह से हम अपना सेल्फ प्रमोशन भी नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताऊं, सेल्फ ब्रैगिंग में और सेल्फ प्रमोशन में फर्क होता है। ब्रैगिंग का मतलब होता है जब हम अपनी उन चीजों की तारीफ कर रहे हैं जो एक्चुअली हम में है भी नहीं, और सेल्फ प्रमोशन वो होता है जब हम लोग एक्चुअली में अपनी उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो हमने एक्चुअली में किया हुआ है, जो हमारे बिजनेस के बारे में है और जो किसी और के काम आ सकता है। जब सामने वाले के काम की चीज हम उसे बता रहे हैं, दैट इज सेल्फ प्रमोशन एंड दैट इज यूजफुल। मे बी दे विल आल्सो सेंड इट as in send some leads to you. So self promotion is very, very important. Then the second point is undervaluing themselves and their services. You know, बहुत सारी women हैं जो कि undervalue करती हैं अपनी services को, बोलती है जैसे इस character में शशि को ही देख लो, she was an entrepreneur but she was undervaluing herself, isn't it? And then not asking for directions because she is afraid. अगर मैं किसी से पूछूंगी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तू एक entrepreneur है क्या, तो इसीलिए डायरेक्शंस के बारे में भी नहीं सोचती हैं, अपने बारे में सेल्फ स्टडी नहीं करती है, अपने रिसर्च नहीं करती है, बिकॉज उनको लगता है कि कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या कोई भी देखेगा, कोई पूछेगा तो हंसने लगेंगे कि यार ये क्या शुरू कर दिया है कि नहीं। देन 1 second, then the next reason is मेकिंग रिलेशनशिप्स द प्रायोरिटी। अब कितनी बार ऐसा होता है कि जो वुमेन होती हैं वो रिलेशनशिप को प्रायोरिटी बनाती हैं, उनके खुद के पहचान वाले अगर आके उनसे बिजनेस के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे स्टार्ट यस तन्मय सेइंग फियर फैक्टर, ब्यूटीफुल तन्मय, यस आई एग्री विद यू। एंड जब हम लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर कोई पहचान वाला आ गया तो जो जितनी भी वुमेन होती हैं सोचते हैं नहीं नहीं ये तो अपना है, इसको मैं कैसे सेल कर सकती हूँ, और फिर वहां पे वो इस चीज को बंद कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, कितने सारे रेफरेंस आ जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, बट वो किसी किसी का नाम लेके आते हैं और फिर जो विमेन है वो डिस्काउंट देने लगती है। सो कैन आई टेल यू, मैं अपनी मास्टर क्लास में सिखाती हूँ कि डिस्काउंट से ज्यादा अच्छा है वैल्यू देना। तो आप जब मेरे मास्टर क्लास में आएंगे मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी। देन द लास्ट पॉइंट is being afraid of making a mistake, जो तन मैंने ऑलरेडी बता दिया, fear factor। yes definitely fear factor एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लगता है कि अरे यार फेल हो गए तो क्या हुआ, कैसे स्टार्ट करूं, फेल हो गए तो सब हंसेंगे, सब बोलेंगे कर लिया तो अपने तमाशा। so इसका एक बहुत बड़ा डर होता है जिसकी वजह से जो वुमेन है वो सेल्स में अपने आप को पीछे कर लेती है। अब करना क्या है, मैं आपको कुछ कुछ टिप्स बताती हूँ क्विकली सो दैट वो आपने काम किया। सबसे पहली चीज है सेल्फ डाउट जो होता है, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। अब आप सोचेंगे रितु ये कहना तो बहुत आसान है, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, लेकिन कितना मुश्किल होता है क्योंकि डाउट्स एंड फियर्स तो हमेशा आते रहते हैं, राइट। सो कैन आई गिव यू वन गुड न्यूज, दे सकती हूँ आपको एक गुड न्यूज। सेल्फ डाउट जो होता है एक सीमा तक अच्छा होता है, यू नो, बिकॉज व्हेन यू आर डाउटिंग योरसेल्फ यू आर लुकिंग फॉर द क्लैरिटी, राइट, यू आर सर्चिंग फॉर द क्लैरिटी। But self-doubt तब खतरनाक होता है when your all safeties are on. For example, if you are starting any business and you have lots of doubts कि फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, फेल हुआ तो क्या हुआ, कुछ बैकअप प्लान नहीं है, बच्चों का कैसे होगा, कैसे अरेंज करूंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे तो कैसे उनको कौन पिकअप करेगा, घर में बच्चों की सेफ्टी का क्या होगा। बट जब आपने वो सारे इंतजाम कर लिए हैं, स्कूल के लिए भी बस लगा दी है, घर में भी सारे कैमरेज हैं, डे केयर है, देन आपकी फंडिंग का भी आपने अरेंजमेंट कर लिया है, अपनी जो भी आपने ज्वेलरी है वो भी आपने रख दी है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप पे डाउट कर रहे हैं देन दैट इज रॉन्ग, राइट। अब आप स्विमिंग को ले लीजिए, आपको स्विमिंग पूल देख के डर लग रहा है कि अगर डूब गए तो क्या हुआ, क्या होगा, लेकिन जब आपकी सारी सेफ्टीज ऑन है, आपका जो गार्ड है वो भी सामने खड़ा हुआ है, आपने पूरी सेफ्टी सारे ले रखे हैं, will you still doubt on yourself? No, that is the time you should start taking action. And मेल रॉबिन्स ने बहुत ब्यूटीफुली कहा है कि जब भी डाउट आते हैं तो you should start taking actions. तो डाउट धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होने चले जाते हैं, राइट। Then make your own decisions. Yes,
You have to make your own decisions. हम में से कितनी सारी मदर्स हैं जो कि डिसीजंस, बड़े डिसीजंस तो छोड़ दीजिए, वो तो छोड़ ही दीजिए, छोटे छोटे डिसीजंस भी हम लोग हमेशा घर वालों से पूछते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा डिसीजन उतना अच्छा नहीं होगा, तो हमेशा पूछते हैं ये करूँ कि ये करूँ, ये पहनूं कि ये पहनूं, ये बनाऊं कि ये बनाऊं, ये सामने वाले ऐसा बोल रहा है, उसको मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि हमें लगने लगता है कि हम उतने वैल्यू के नहीं है, राइट? बट जब आप उन छोटे छोटे डिसीजंस को खुद से लेना शुरू करेंगे ना, तब आप अपने डिसीजन मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में भी जाकर अपने डिसीजंस खुद लेंगे. So it is really important to empower yourself, and when you are empowering yourself, you have to start making decisions. That is the very important factor. जब आप मेरी मास्टर क्लास में आएंगे तो मैं आपको डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत अच्छे से टिप्स दूंगी. एंड देन रेज योर नॉलेज. यस, हम में से बहुत सारी मदर्स हैं जो ये लगने लगता है कि अरे नहीं, और कई बार हम सोचते हैं ना हमें सब पता है, ये भी एक फैक्टर होता है, हमें लगता है कि हमें सब पता है, बट यू नो व्हाट, अपने ईगो को असाइड में रख के अगर हम अपनी नॉलेज को गेन करना स्टार्ट करें और हमें लगने लगेगा कि धीरे धीरे अरे बहुत कुछ है जो जानना है, इसके बाद ही तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, right? So please keep on learning and commit yourself to be a lifelong learner, because that is what it takes to be successful. And you know what, mothers and my beautiful young adults, जब मैंने 12 साल से, जब मैंने अपने करियर में ब्रेक भी लिया था, उसके बाद मैं वापस आई एंड मैं अपना बिजनेस भी रन कर रही हूँ और मैं अपने जॉब में भी हूँ, आई नो एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स. सो यू नो, अपनी नॉलेज को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है. Then say no to mummy guilt. Yes, mummy guilt is extremely important. कि ये हम लोगों का बहुत बड़ा फैक्टर होता है. ज्यादातर मदर्स बोलती हैं अरे बच्चों को क्या होगा, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे निग्लेक्ट हो रहे हैं. बट यू नो व्हाट, जब मदर्स जॉब कर रही होती हैं या बिजनेस कर रही होती है, तब भी उनको ये गिल्ट होती है कि बच्चों को निग्लेक्ट कर रहे हैं. बट जो मदर्स घर में होती हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, आप उनसे पूछिए, उनको इस बात का गिल्ट होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही. जो मेरा बच्चा चाहता है मैं उसको दे ही नहीं पाती, क्योंकि हस्बैंड से पूछ के देना पड़ता है. वो छोटी छोटी चीज के लिए भी डिसीजन नहीं ले पाती, इस बात का भी गिल्ट होता है. तो मम्मी गिल्ट का तो कोई अंत नहीं है, और मम्मी गिल्ट जो एक रेजिस्टेंस का एक चेहरा है, वो आपको रोक रहा है आपके खुद के सक्सेस से. तो इस गिल्ट को तो प्लीज हटा दीजिए. जब भी गिल्ट आए सोचिए माय मिशन इज बिगर देन माय गिल्ट. एंड अ हेल्दी मॉम इज अ हैप्पी मॉम. यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा आपको ये नहीं कर रही हूँ कि आप वेट लॉस कीजिए, वेट गेन कीजिए, 0 साइज फिगर कीजिए, नो, बट अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना अच्छा खाना खाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, because when you will be happy and healthy, then only you can, you know, play with your child and you can make a quality time with your child. And then explore your passion and learn to monetize your skills, you know. So it is really important, my dear mothers, it's not a choice. It's not a choice. कई बार हम ये सोचते हैं ना कि मेरी ऐसी कुछ क्लाइंट्स है जो बोलती है कि my husband is earning a lot and I'm chilling. But it's not a choice, because you never know कल क्या हो जाए. और आपको अगर भगवान ने किसी क्वालिटी से ब्लेस किया है, कोई स्किल है जो आप मोनेटाइज कर सकते हैं, प्लीज यू मस्ट डू दैट एंड यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर करियर्स, क्योंकि तभी आप अपने आप को रियल वे में एम्पावर कर पाएंगे. एंड at last I will ask again the first question, which is what mothers want. And according to me, अगर मैं आपसे बोलूं कि what mothers want, जितने सारे मैंने अभी तक इंटरव्यूज लिए हैं क्लाइंट्स से के भी, और जितनी मेरी इंटरेक्शंस होती है, मैं इतना तो गारंटी से कह सकती हूँ, एक बेसिक चीज जो मदर वांट करती है, जो मदर चाहती है, वो है every mother wants a permission to live her life in her own way. This is what a mothers want. So with that, I would highly encourage you all to follow me on the social media, which is Instagram, Facebook, LinkedIn, and YouTube. Team, can you please put my details so that they can follow me? And I would love to invite you to my masterclass, which is Mom to Mompreneurs. यहाँ पे अगर आप लोग ये सोचें कि मैं ये क्लास में आते क्या करूंगा, तो आई वुड हाईली एनकरेज आप एक बार आके देखिए, आपको पता होगा कि आप अपने मदर को कितना एम्पावर कर सकते हैं. जब आप समझेंगे तभी आप अपने मदर को समझा पाएंगे. एंड आई वुड लव टू हैव योर मॉम्स आल्सो ओवर हियर सो दैट आई कैन हेल्प, because I am on a mission to empower 100,000 mothers to live a guilt-free life by monetizing their skills. So definitely I would love to help them. तो ये मेरा मास्टर क्लास है, which will be as in next week, जो है लास्ट में वीकेंड में होगा, and I will definitely update you all. But before that, I will give this bonus to each one of you.
This is my WhatsApp number, and I would highly encourage you all for 1-to-1 free clarity session, जहां पे मैं आपकी गोल सेटिंग से लेकर आपके जो भी पेन पॉइंट्स है उनसे लेकर जो भी आपका पैशन है उन्हें मोनेटाइज करने के लिए बता सकती हूँ. Because you know what, I am the right person to help you out with business, because I am doing this business from so many years. I am the head of sales and marketing, and मैंने अपना business development का course IIM लखनऊ से किया है. तो डेफिनेटली मुझे बिजनेस से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं जिससे कि मैं आपको जरूर से मदद कर पाऊंगी कि आप अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी को सक्सेसफुल बना पाएं. विद दैट नोट, आई वुड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच मोनिका जी एंड टीम फॉर इनवाइटिंग मी. ओवर टू यू मोनिका जी. Wow, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. It was a wonderful session. Just the screen sharing off karo. एक मेरे को बहुत important information share करनी है for our participants, those who are here. And what are हमारे जितने ये speakers, but I really want all the speakers to be put their screens on, please. Great, great. Thank you, everyone. And सबकी रजामंदी से there was a game that we were playing. Game कह लो, guess कह लो. We were thinking कि हमें कोई ऐसा participant who's throughout active, right from the first till the end. And that goes to Tanmay Sharma. Yay! Tanmay. Thank you, ma'am. We choose you as are the most expressive, most participative participant, and really, really, really hats off to you. And you were so good. And now, whether you have registered or not registered, you are open for all the sessions. And जो भी session तुम लेना चाहोगे, सब में तुमको 50% discount मिलेगा. This is the decision of all the speakers. Ma'am, I registered for all sessions. 3 sessions. Oh, wow. Great. Okay. I just invite all the speakers to be over here. Put your screens on and just one-liner from everybody so that what you are giving them. और आप क्या last sentence बोल के हम अलविदा करते हैं. अलविदा तो खैर नहीं करना चाहिए. Very soon after 2 weeks, we'll be coming back with a big bang with more 6 speakers, and obviously anchoring तो मेरे से अच्छा और कोई करता नहीं है, तो I will be anchoring that. So Tanmay, you can invite all your friends. Right? And from my side, I always say, for me, you are important. For me, your happiness is important. For me, आपकी जिंदगी में difference create करना मेरी importance है. For me, your commitment, your transformation is my commitment. I promise you. आके देखो, तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए magically तो कहना मुझे. Great. So again, revising, tomorrow 29th evening, I am giving a webinar. किसी ने नहीं, Varun, please, if you can share the registration links once again for everybody. And हमारे सब speaker एक note बोलते हुए, then we will take off. Thank you for bearing with us. Thank you for participating so well. I promise you, जिस भी session में आप जाओगे, you will get that value. Because we value people, we value what we have, we value, आप यहाँ पे participate, आप हमसे सीखने नहीं आए हैं, हम आपसे भी सीख के जा रहे हैं. That is the thing, So, over to you, Vinay sir. Yes, thank you, Monika ji. It was a wonderful session. Great. Next. Who's next? Maruti. Vivek. Hi.
Thank you all for giving me this opportunity to be of some service to you. But remember one thing as a farewell note. Had India not got its independence, had India not got its freedom, would India would have progressed? We struggled a lot for it. Now start working on your personal freedom. Without freedom, life is nothing. Right? जहाँ जिंदगी है वहाँ बंदगी नहीं है. जहाँ बंदगी है वहाँ जिंदगी नहीं है. Remember this. Freedom is priceless. Work for it. Thank you all very much. See you all. Thank you, Vivek. Ritu, do you have Dr. Sonal here? They have some other commitments, so they need to leave. So we have Ritu with us. Yes, Ritu. So much, Monika ji, and thank you so much, everyone. Congratulations, Tanmay. So I would love to see you in my one-to-one session as well. And before ending the session, I would love to quote one note. जब हम लोग बोलते हैं ना कि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ज्योतिष कुछ कुछ कहने लगते हैं, but the best way to predict your future is to create one. So we have to create our future, we have to design our future, then only we will be able to predict it. So that's what I wanted to say. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for your participation. Thank you for being here. Thank you, thank you, thank you. आज आप कहीं भी जा सकते थे, but you choose to be here. That means a lot to each one of us. Thank you. God bless you. Love you all. Thank you.